Good morning, everyone. Online people, I am clearly audible. Fine. Okay, everyone has got the pamphlet or handout? No. कहाँ गए बाकी? कितनों को नहीं मिले? यार कोई एक मिनट जरा पीछे बोल देना उनसे और प्रिंट के लिए कम पड़ गए होंगे. आ रहे हैं? Cool. ठीक है, फाइन. चलिए तो लेट अस स्टार्ट by the time they provide you. The first thing that we have about is the rise of political corporate nexus in India. This is important for your GS paper 4 ethics. In ethics, there is a line about corporate governance. So this is important context of corporate governance. Basically, what has happened? A book has been published by Simon Commoner and Saul Easton in their joint book titled The Connection World. They have named this The Connection World, the Future of Asia's Capitalism. First, what is capitalism? Anyone has some idea? Basically, capitalism is a system that driven by demand and supply. Basically, okay, they say there shall be no state interference whatsoever. The government will not decide anything. Everything will be determined by demand and supply. So that is basically capitalism. But there is a problem with this. Okay, capitalism is an economic philosophy of liberalism. Capitalism is the economic component of liberalism, while liberalism is the political component of capitalism. The essence of liberalism is liberty. The central core of liberalism is liberty. So, as such, if you see politically we can say capitalism is forward. Economically, it may have different consequences. So, you tell me what kind of political system a capitalist may prefer. Assume yourself as a capitalist who believes in complete liberty, who believes in demand and supply. सबको समझ में आ रहा है what kind of system they will prefer? Democracy, because they want liberty, and democracy is a system in which they can ensure some semblance of liberty, some semblance of control. The government, the rule by a monarch will not decide. I, as the voter, will decide. I will have more freedom than a monarchical system. So anyway, democracy means democracy, rule of the people. But what happened in advanced capitalist society like USA, UK? Few people came to control the entire economy. Few people. What democracy is? Rule of the people. But in all liberal democracy, you see few people controls everything. So it was criticized by socialist. Socialist, the essence of socialist is social. The essence welfare nahi hai. The essence of socialist is social. It is more about a cooperative living, a socialist society. So socialists said, if your democracy means rule of the people, then how come in your system few people control everything? सबको समझ में आ रहा? What was the question they raised? The question they raised is, if in your system, so-called capitalism, if democracy, rule of the people is true, then how come few people control everything? How come they decide everything? So they said the so-called democracy of the capitalist is not actually rule of the people. It is rule of the capitalist. It is a dictatorship for the working class. Aapne, have you ever seen Delhi police beating any Adani Ambani? But you must have seen police beating the working class, asking for good wages. Why is it so? This news in this context. Everyone is getting the background. The background is the capitalist form of democracy that we have around us. Even in India, you have a capitalist form of liberal democracy. Clear? So what has happened is, itna please remember everyone, we will deal with it later. However, they argue this is not new to the world. What they are arguing in their book, this connection world between the corporate and the political class is not new. It has always been in existence. But what is new is
that market concentration by big and highly diverse business group. Most of them are family owned. For example, in India, if you look, the top 1% of India controls around 65% of national wealth. The top percent of 1% of India controls around 65% of national wealth, and they pay around 3% of GST. While the bottom 50% of India holds around 3% of national wealth. Of the entire national wealth, only 3% is with these people, and they pay around 63 to 65% of taxes. Oxfam report I am talking about. This is the stark inequality that you have in the society. यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है that you have a capitalist liberal democracy which says that we are a rule of the people, where everyone has an equal right. You can vote, you can choose your government at your will. But then came the socialists, and they were like, where is this government? If it is rule of the people, then how come few people control everything? How come they decide everything? That's the question they raise. Then a bigger question comes is, if this system is so bad, and why is it happening? क्या हो गया इसे? If this system is so bad, let's take an example. Samsung controls around 20% of South Korea's GDP. It's too big. Same in example of India and China. Few families, the top 10 companies control around 10 to 15% of GDP. If you are controlling that much of wealth, that much of money, then you certainly control the government also. How come? Who give funding to political parties? Capitalists. When you will give funding, so you will make them do your work. Common sense. You will make them do your own work. Okay, I have told you earlier also, initially for political parties, it was banned to take foreign funding. You cannot take money from a foreign company. You cannot take money from a foreign company. Then BJP and Congress both took money from a company called Vedanta, UK-based company. It was a violation of the law. So Delhi High Court pulled both of them. Why you did this? So BJP, because it is in power, it brought an amendment in the law. Slowly, chupke se, an amendment was brought. Congress supported the amendment. The amendment was passed. Nobody covered it. आपको नहीं पता because media never talked about this. So when देखिए, both are basically, Congress always tried to basically always criticize BJP. BJP always criticized Congress, but here both supported each other. This is politics basically. So getting the point, keep this in mind. There is no party in India that does not like capitalists, because without capitalists they cannot run themselves. Funding they provide, they control basically the entire economy in India. So you cannot make them enemy. But difference is, some party love capitalists more, some party love capitalists less. That's the only difference. They have different philosophy also. For example, Congress, all this so-called capitalism in India started with Congress. 1991, when India became liberalized. Before that, India was a closed economy, controlled by the government, not by the capitalists. सबको समझ में आ रहा है? In this context, it is highlighting. And how does it work? I told you how does it work. The politician, they take money from the corporate in campaigns, in personal contribution, in bribes, in senior. Their family members work in. You see all political parties, family members, they work in some or other corporate at a higher position. They receive a good handsome salary. They create jobs in the region, and that too politically advantageous. So political class get what? They get campaign contribution, they get personal contribution, they get bribe, they get senior, they get job in the region they want. Okay, next. What business group get? Business groups are organized. This is the biggest advantage of capitalism. These people are organized. These are few and can live organized. Working class, why they do not have any rights? Because they are not organized. They are divided in the name of race, religion, caste, gender. They are divided. They do not see that all of them are one. What is the interest of all the working class? Same. Better wages, a bit of time, everything they want. They do not want what capitalists want, but capitalists are so organized, they can control what they want. The workers are so divided in religion, caste, region, that they are unable to assert their influence. That is clear. So that is the thing here. Business groups are organized. And you see around the world, because of this,
capitalist control over the government, inequalities are rising at a rapid pace around the world. And that is why protests are also rising at rapid pace around the world. Recently, France may happen. We also, I told you at that point of time also, the people of France were not angry with that boy getting killed by the police. They were angry with their own grievances. They were just waiting. बस एक मौका मिल जाए सरकार को आग लगाने का. And this is with everyone around the world. We will do also Manipur's example also. यहाँ तक clear है? So the question comes is why people are not protesting? Why you are not uprooting a government? If you know government is favoring some capitalists, as this book highlights, then why you are not throwing them out of power? So why? इसमें एक concept है which basically we need to understand something called opaque state. Let's understand how does it work. देखिए, there are a lot of information that comes to you from various mechanisms. For example, Ukraine war. And what is happening in Ukraine war? So opaque state. The question that this book is trying to understand is why people are not resisting this control. Why people are not resisting about this. You have heard a phenomenon in India, भक्त. मैंने देखा ना, वो कहता है 200 रुपए पेट्रोल नहीं चाहिए, मुझे 2000 रुपए पेट्रोल चाहिए. And the other people who say शेर को पाला है तो खर्चा करना पड़ेगा. ये आते कहाँ से हैं? ये आते नहीं है, इन्हें बनाया जाता है. They are manufactured through a system, and that system is called opaque state. So basically, I told you capitalism, and we understood socialist criticism of capitalism. So these socialist people, particularly Karl Marx, I'm talking about, he predicted that when inequality will be at its peak, when everything will be with capitalists will have everything and nothing will be at working class. At this point of time, the working class will develop revolutionary consciousness. When this difference, the difference in wealth, income, the inequality will be steep. They will have everything, they will have nothing. At that point of time, the working class will develop revolutionary consciousness, and then it will revolt against the capitalist. Particularly, he predicted in advanced capitalist society like UK. But UK never witnessed revolution. Neither did USA witness revolution. Both are neoliberal capitalist societies. Then this question came, was Karl Marx wrong about this prediction? That people will revolt against inequality. Then there was another scholar, he pondered over this question. Why? Why people in advanced capitalist society never revolted, but people like in Russia, which was semi-feudal, people like in China, both had communist revolution. So he pondered over this question, why these people revolted. Actual prediction was that revolt will come in advanced capitalist societies because there everything is controlled by the capitalists and the working class has nothing. But then why revolution came in USSR kind of country or China? He found the answer in opaque state. He said because in these countries like USA and UK, the people do not know about their deprivation. Why they do not know about their deprivation? Because the civil society, which is schools, schools, media houses, newspaper, they all are controlled by capitalists. And how they work? For example, Ukraine war. You people, how you know what is happening in Ukraine? Who is killing whom? Who is maiming whom? Media. अब आपने तो विजिट नहीं किया होगा यूक्रेन में. मीडिया टेल्स यू व्हाट इज देयर. और अब तो चलो सोशल मीडिया आ गया, पहले तो वो भी नहीं था. तो बेसिकली ही फाउंड दैट देयर आर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कम्स टू द पीपल. Media acts like a slit. Media, I am not talking only about the broadcast media or print media. I am also talking about the books you read, the institution you go, the schools, the colleges, they all work together. And if you see particularly in advanced developed countries, they are controlled by capitalists. They are controlled by capitalists. So they filter information.
This is you. The civil society filters information. Out of various information, they only allow that information to pass through them to you, which favors them. And that's how you create a भक्त. ठीक है, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग होती है इनकी. सबको समझ में आया? एंड सोशल मीडिया हैज जस्ट एडेड टू दिस. Everyone is getting the point why revolution does not take place. Even you are exploited because you did never know about your exploitation. You never get that information. And who does that? The civil society, the media. Ab now look at the structure of India's media. If you look at the ownership of India's media, it is controlled by two families. I cannot name them. I also love my freedom. Okay? It is controlled by two families, and those two families has very good relation with the Voldemort of India. Okay? Whose name we cannot say. Okay? Those two family has very close relation with somebody, and that's how they propagate. If you take Manipur, I will do that later also. If you take Manipur as an example, why media remained silent for 3 months? Only when that incident, gruesome incident took place, they had to speak. There were two things. Pehla, the people who committed that atrocities were Hindus. So that narrative that media is trying to create, that Muslims are the problem in the society, the Islamophobia is not working. Pehli cheez. Second, the government is of some particular person. If the atrocities were either committed by Muslims or the government would be of Congress, I can guarantee you it will be a news 24/7 on media. Even you can see yourself. Right now, look at any media channels. None of them are mentioning that they are Hindus. Every them is mentioning darinde, pata nahi kya kya bol rahe hain, but none of them are saying that they are Hindus. Why? Because narrative shaping is necessary. If you call them Hindu, then the people you have created, the Bhakt, the people Bhakt whom you have created by telling them that Muslims are the problem, how would they support? अब उनको confusion हो जाएगा ना. They will get confused. यार ये क्या हो रहा है? हमें तो लगता था कि केवल तालिबान ही ऐसे काम करता है. Getting the point? This is the manipulation that is going on. ये सारा सबको समझ में आया? That's what this book is saying about. There is a corporate nexus in entire Asia, and India is part of it, where few families are so much in gloves with the government, of ruling government, that they support each other. The corporates, because they control media and everything, because they have a lot of money to control, they support the government through narrative shaping in favor of the government. And the government support them by giving them rewards in form of contract. For example, farm laws. What an example. When the government brought farm laws, it was brought immediately. Nobody knew. Then how come few families, they were creating big godowns? Unhe kaise pata laga? If farm laws were brought immediately without anyone's information, then how come they got to know this? Before farm laws, they were building big godowns because farm laws were liberalizing the India's agriculture system. If nobody knew about it, farmers who will be impacted by farm laws, उन्हें नहीं पता था, लेकिन कुछ लोगों को पता था. How come they knew about it? And before that, they starting buying the property to get big, to build big godowns. देखिए, farm laws are good or bad, that's a different debate. What we are talking about is a nexus, something the scholars are calling connection world. Clear to everyone? They all support each other. अच्छा, हाँ. नहीं, वो आती रहती है. देखिए, फिर एक बात समझिए, आती तो हर तरह की वीडियो है. देखिए, बेवकूफ लोग हर जगह पाए जाते हैं. ठीक है, और मैं हमेशा कहता हूँ कलेक्टिव पनिशमेंट इज नॉट द वे फॉरवर्ड. जस्ट बिकॉज कुछ लोगों ने कुछ किया, उसके लिए आप सबको पनिश नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, वुमन को बोलते हैं दे आर द बैडेस्ट ड्राइवर. कितनी क्लिपें चलती हैं कि फुटपाथ पे गाड़ी चला रही हैं. ठीक है, बंदे के लग जाती है, वो कहता है सॉरी मैम, मैं यहाँ खड़ा था. ठीक है, ऐसा थोड़ी ना होता है. इतना सेंसिबल तो हर कोई होगा कि फुटपाथ पे गाड़ी नहीं चलाई जाती है. बट नैरेटिव शेपिंग एक बार बन जाता है, कॉमन सेंस तो बन जाता है. उसके लिए काफी एफर्ट्स लगते हैं, खासकर सोशल मीडिया में. ठीक है, और मैंने आपको बताया ना, फ्यू पीपल कंट्रोल सिस्टम. वही तो ये बात है, कनेक्शन वर्ल्ड. ठीक है, तो इनके पास बिल्कुल होता है सर. इनको कॉर्पोरेट एक चीज याद रखिएगा, दे डोंट केयर अबाउट द गवर्नमेंट, दे ओनली केयर अबाउट whosoever supports them. For example, the corporate class of Bengal,
they will support Mamata Banerjee because Mamata Banerjee is in government. They want contract, they want every. For example, recently the Telegraph, it's a newspaper, print newspaper in Bengal. It has published a front page, a crocodile. Front page it published a crocodile. It was having tear. Basically, they were talking about Prime Minister Modi. So Telegraph published this, that it took 76 days of agony to pierce the 56-inch skin. Heading was, it took 76 days of agony and pain to pierce the 56-inch skin. Because अब बोले ना मोदी 76 दिन बाद, तो टेलीग्राफ ने कैसे पब्लिश कर लिया? Because Telegraph print newspaper is in Bengal and it supports Bengal government. ऐसा नहीं, आई एम अगेन रिपीटिंग, ऐसा नहीं है कि एनी पार्टी हेट्स कैपिटलिस्ट. Every party needs capitalists because they support them, and that was the criticism of socialists. The so-called democracy, which is the rule of the people, is actually the rule of the capitalists. It is a dictatorship for everyone. वो तो जिसकी सरकार होती है, मैं फिर बोल रहा हूँ, कैपिटलिस्ट भेदभाव नहीं करते. वो भेदभाव नहीं करते बीजेपी या कांग्रेस है, ये आम जनता के काम है. ठीक है, दे सपोर्ट एनीवन हु विल सपोर्ट फेवर देम. आज बीजेपी से फेवर कर रही है तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं. द डे कांग्रेस विल बिकम मोर लाइक बीजेपी, अ कॉर्पोरेट फ्रेंडली गवर्नमेंट, दे विल स्टार्ट सपोर्टिंग कांग्रेस. ऐसा नहीं है कोई भी, इट डजंट मैटर. ठीक है, चलिए, एनीवे, क्लियर टू एवरीवन. चलो, अब व्हाट वी कैन डू अबाउट इट. जैसे फॉर एग्जांपल, अ सॉल्यूशन दैट इज बीइंग गिवन particularly of this concentration of wealth and power in few families, particularly गिनी चुनी कंपनियां. The solution that this book talks about is, this is important in the context of, again I am repeating, corporate governance. GS paper 4 corporate governance, GS paper 3 the concentration of wealth, that is inequality chapter. दोनों के लिए this news is important. So the suggestion that this book has given is breaking up of companies. It is saying break big companies into small companies so that they will not have over dominant power. Right now one company do everything. They गिनी चुनी कंपनी है, they are in every field, कहीं भी जाओ उनका नाम मिलता ही मिलता है आपको. Because of this, these companies, the owner of these companies are too much powerful. Everyone is clear what they are suggesting, and they have given some example also. जैसे for example, the US government in 1911 break up the Standard Oil. It was a company in USA. They broke it up because it was becoming too much powerful to control the government, basically. And if a company become too powerful, I'm telling you, they start controlling the government. जैसे there was a comedian who said, why can't I vote Adani Ambani directly? मोदी जी बीच में क्या कर रहे हैं? What he was trying to say? He was trying to say that basically the capitalists control so much of this government कि हम किसी को भी वोट डालें, हम इनको क्यों वोट डाल रहे हैं, उनको क्यों नहीं डाल रहे जो सरकार चला रहे हैं. Getting the point? The same thing is here. अब क्वेश्चन ये है, सबको समझ में आया सॉल्यूशन क्या बता रहा है ये? ब्रेक अप द बिग कॉर्पोरेशंस इनटू स्मॉल कंपनी सो दैट दे कैन बी बेटर रेगुलेट एंड कंट्रोल्ड. बट प्रॉब्लम क्या है? पहली प्रॉब्लम तो ये है कि उनकी प्राइसिंग, प्रॉफिट एंड कॉम्पिटिटिव पॉलिसी, देयर इज नो क्लियरिटी ओवर दिस. व्हाट काइंड ऑफ प्राइसिंग, प्रॉफिट एंड एंटी कॉम्पिटिटिव पॉलिसी दे यूज, किस तरह के इंटरनल स्ट्रक्चर है उनका, अकाउंटिंग कैसी करी जाती है. दे यूज अ लॉट ऑफ मैनिपुलेशन इन दैट and it is not very clear. अगर ब्रेकअप करोगे तो I need clarity over that. पहली चीज. सेकंड चीज, किस क्राइटेरिया पे करा जाए. पहली चीज समझ में आई, their accounting practices are not very clear and evident. Second thing is, even if you want to break a company, on what criteria you will break, you have to decide that first. Just because a company is big, you cannot break it. It may be working well for the country. You're getting my point? Just because a company is big, you cannot break it. We first must decide some very good criteria. This will be an index, मान लेते हैं, there will be 2 to 3 criteria, and we will say whosoever will satisfy these criteria will be divided. Getting the point? What they are saying. And the third thing they said is the required political resolve. बोल रहे ये सब तो हो भी जाएगा एक बार को, लेकिन political will की सबसे ज्यादा जरूरत है, and which they believe is highly unlikely to happen. सबको समझ में आ रहा है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम सबको समझ में आई. द प्रॉब्लम इज दैट दिस बिग कॉर्पोरेशन आर नाउ कंट्रोलिंग द कंट्रीज. दे डिसाइड व्हाट विल हैपन, दे डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसीज विल बी ब्रॉट, एंड इट इज इन एंटायर एशिया अकॉर्डिंग टू दिस बुक.
And to do this, you need to divide companies. But the problem is, in what parameters should be used to divide these companies? And most important, is there any political resolve? The answer is no. Right now, there is no political resolve because people को पता ही नहीं है ये बात. And why they do not know? Media. It makes sure you people do not get the real picture. Just for example, a lot of people think that there is less corruption in private. Private is more efficient. Private is more effective. Government is corrupt. Government servants are lazy. They believe this. It is wrong. Private में corruption you cannot even imagine. But the problem is the corruption is concentrated at top. They negotiate deals directly with the government of billions of dollars and take it away. You never feel it because you never go. When you go to an office, those people say, "Hello, madam. Hello, sir. आइए बैठिए चाय पीजिए कॉफी पीजिए." And you are like, "ये बढ़िया system है." You feel that like, but the lower employees there may not have power. The upper employees, the upper executive does everything, and that's why there is concentration of wealth. सबको clear है? चलो बाकी आप पढ़ लेना. मैंने I have given you summary. Some success examples have been given. You can read them. चलिए next news देखते हैं. ये कहाँ से आ गया? The Manipur crisis. मुझे कहा second news. So second thing is about the Manipur crisis. So some statistic. More than 250 churches have been torched. More than 100 people have been killed, and more than 40,000 people have been displaced. There is no exact figure coming out of Manipur. It is very highly censored. What is happening in Manipur? Say more important is why it is happening. If you see, there are particularly two groups there: Metis and Kukis. Also, there is a small part of Nagas. Kukis are on the southern Manipur, Nagas are on the northern Manipur, and Metis are on the valley. Hills mein you have Kukis and Nagas, and valley mein you have Metis. Metis are predominantly Hindus. Few are Muslim. Metis is a blend of Hindus and Muslim, but majority of them are Hindus. Few are Muslims. Kukis are Christian, and Nagas similarly Christian. Because you know Christian missionaries, when British controlled this country, they pushed Christian missionaries to convert tribals. Tribals have their native religion. They worship land, they worship forest and all. Native way of worshipping. So Christian missionaries converted tribals. So if you see the religious structure of tribals in India, majority of the tribals are Christian because they converted to Christianity. Clear this much? Okay. So what happened is Kukis and Nagas, they were enjoying reservation. ये सारा ड्रामा reservation का हुआ है. Reservation ने शुरुआत करी. And Kukis and Nagas, they were enjoying something, the status called ST, Scheduled Tribes. देखिए इसका status मिलता कैसे? Article 365 of the Constitution provides that scheduled tribe means such tribes or tribal community as declared under Article 342 of the Constitution. The article कहता है STs will be those people who will be declared under 342. 342 says that the president will issue an order. That the president will issue an order with respect to any state or union territory. In case of a state, the consultation with governor. In that order, it will specify which tribes or tribal communities are STs. This is the constitutional position. The Constitution, Article 342 says that the president will pass an order in consultation with the state governor to decide which communities of that state will be STs. Same is for SCs. SC में भी same provision है. SCs में भी same process है. But any amendment to the list, एक बार order pass हो गया, which has been passed in 1950. After that, any amendment to the list can be done only by parliament. The president has no power. सबको समझ में आया? Initially, the president will decide the list. But after that, if you want to add any community, remove any community, that can only be done by Parliament of India. The president has no power in that regard. This much is clear. Now, how this procedure take place? What happened? The respective state government, if मान लेते हैं today any state government wants any community in ST list, the state government will send a recommendation to Tribal Affairs Ministry. The Tribal Affairs Ministry will review the recommendation and will send to Registrar General of India. The Registrar General of India will then send to National Commission for Scheduled Tribes.
Once NCST will give approval, it will go to Union Cabinet. Union Cabinet will pass it to the Parliament. क्योंकि amendment Parliament ही कर सकता है. Clear the procedure? You will recommend to the Tribal Affairs Ministry. The Tribal Affairs Ministry will recommend to the Registrar General of India. From that, it will go to National Commission for ST, then the Cabinet, and ultimately in the Parliament. That's how the procedure works. So, what was the issue here? When initially the order was passed, the Metis were not included in STs. Initially, the order was passed, the Metis were not included in the ST list. After that, a committee was appointed known as Kaka Kalelkar Committee. This committee was appointed to revise the list. This committee asked every state which community you feel should be in the ST list. At that point of time, the Methi people denied to include themselves. कहाँ गया? अब एक क्वेश्चन आता है, if the Methi people themselves in 1956 denied to be the part of ST list, then why today they want ST list? Huh? Yes, this is the reason. Because देखिए पहले क्या होता था, the lower community used to change their surname. What they used to do, they used to put Gupta, Sharma. Why they used to change their surname? Because to do away with caste stigma. Surname से caste decide होता है इंडिया में. If you have an upper caste surname, the people may not identify you immediately. अब एक reverse trend चला है. Now upper caste people wants to be identified like lower caste. Not because they love their life, they despise them, but because of reservation. And why is it happening? थोड़ा सा I will go in economics. Basically, there is a term called structural unemployment. It's a type of unemployment that is based on lack of skills. Structural unemployment means jobs are in the market, but you don't have the skills to get those jobs. And the majority of Indian youth are unskilled, unemployed. ऐसा नहीं है they are skilled and unemployed. They are unskilled and unemployed. If you read any newspaper, all the corporate, they say only one thing, that India produce idiot graduates. We produce graduates, but they are idiots because they know everything in the books. They do not have skills. सबको समझ में आ रहा है what is the problem? The graduates in India do not have skills. They have knowledge. So what problem that is called as structural unemployment. When you are structurally unemployed, what are the options left? Of course, you will go to agriculture. You are like, chalo agriculture kar leta hu. And that's why majority of India is in agriculture. That is something we call disguised unemployment. Disguised unemployment means you require 2 people for a work, 4 people are working there. So 2 people are a waste. They are working just because they have no other place to work. Getting the point? That's why our agriculture is heavily burdened. Those people who do not like farming, they start some chota mota business. अब the problem is these business survive only on margin. These people are earning and eating daily. ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ी corporation चला रहे हैं. Getting the point? You are structurally unemployed, so you go to agriculture. Those who cannot go to agriculture goes to business, and those who have a bit of कीड़ा, government job वाला, so they are like चलो government job ही try कर लेते हैं. सबको समझ में आ रहा है what is the problem? You are structurally unemployed. Because of that, you are burdening the agriculture. You are starting self-employment and you're trying for government job. Because government job do not require skill. Any job. For example, UPSC if you take an exam to recruit IAS, IPS, numerous vacancies. IPS person will do policing and he's taking what? He's taking political science as an optional and clearing the exam. Political science and policing, how they are related? Indian Audit and Account Service, IAAS. You clear, for example, UPSC using sociology and you are doing CA kind of work in Indian Audit and Account Services. All government exams are like this. For example, SSC exam, they recruit income tax officer, they recruit CBI inspector, they recruit clerk, and all goes to same exam. Mathematics, reasoning, English. Most of the government exam are uniform. They do not check skills, they only check knowledge. पास में यूपीएससी थोड़ा अलग है बिकॉज यूपीएससी में पर्सनालिटी इंटरव्यू भी होता है, मेंस भी होता है, थोड़ा अलग है. बट मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट एग्जाम आर नॉट स्किल बेस्ड एग्जाम, दे आर जस्ट नॉलेज बेस्ड एग्जाम. एंड इसलिए लोगों को क्या लगता है
गवर्नमेंट जॉब ट्राई कर लेते हैं, बिकॉज प्राइवेट में आप करोगे, आप पे स्किल्स है नहीं, तो प्राइवेट में आपको अच्छी सैलरी मिलेगी नहीं. प्राइवेट में nobody respect degree, everyone respect skills. You can ask anyone who is well paid in private. जो कम paid है वो तो रोएंगे ही. Who are well paid in private, if you ask them, then they all will say skills matter. Skills, I am not talking about technical, but social skills also. How much you can connect with the people, how well you are known in the office. कुछ लोग होते हैं who are introvert kind of people, उनका तो promotion होना ही नहीं कभी. ठीक है, ये है. Social skills are the most important part in any job, even in government. If you have social skills, you can bond with your boss, you can bond with the colleagues, you will always grow. And if you are secluded sitting at the corner, nobody will care about you. प्रमोशन आएगा तो आपका नाम किसी को ध्यान नहीं होगा, प्रमोशन कैसे होगा? सबको बात समझ में आ रही है? So अब what is happening? Current government is neoliberal. The capitalist form I told you. They are privatizing everything. So the government job you are trying for, they are declining. So what is the remaining option? For example, if you know UPSC, I think 2010 before, if you see the vacancies and the applicants, there used to be 30 to 40,000 applicants. Now there are more than 15 lakh, somebody told me last time. 15 lakh. So 20, 30,000 to 15 lakh. Look at the increase in applicant. Why is it happening? Common sense, structurally unemployed, you are unable to go to business, agriculture. कुछ लोग हैं जो यूपीएससी को फिर भी काउंट नहीं कर रहा है. I'm again saying UPSC is different. यहाँ पे a lot of people come for different reasons, not only for having a government job, they can have a good job in private also. They are here just because of different reasons. वो एक अलग है. Majority of government exam I'm talking about, except UPSC and state PCS. Clear this much? So what is happening? Government jobs are reducing. मान लेते हैं previously there used to be 1,000 government. For example, banking is a good example. Banking में there used to be around 70,000 clerical job every year, and there used to be more than 10,000 PO who become assistant manager, who reach to the top. This much of vacancies every year on an average. Now the vacancies are not less than around 4 to 5,000 clerk and around 100 to 1,500 PO. Look at the drop from 70 to 4. Why is it happening? Because of privatization and digital India. अब banking में because of digital India you do not require banking officers. उनका क्या करेंगे हम? सबको समझ में आ रहा है? You are unable to get job in private. You are unable to get job in government because of decreased vacancies. अब आप क्या चाहते हैं कि जो बची कुची वैकेंसीज है उसमें रिजर्वेशन मिल जाए कम से कम. इसलिए मेतीज in 1956 said we do not want to join ST list. Because at that point of time there were numerous vacancies. Government was everywhere. I told you, मैंने अपने father का example दिया था. When he went for interview, he was the only person for interview. इंजीनियर की वैकेंसी निकली थी, वो अकेला व्यक्ति थे जो इंटरव्यू देने गए थे. तो जॉब तो मिलनी है. Getting the difference. आज के समय में ऐसा नहीं होता है. तो that is the problem they want. तो इसलिए बदलाव आया है. वो मेथी जिन्होंने कभी बोला we don't want to get into the ST list because ST list का मतलब stigma. That you are from tribal community, backward. They did not want that stigma. Ab now they want that stigma because they want the pie of the remaining cake. को समझ में आ रहा है? अब ये है मेन रीजन. एंड अब ड्रामा शुरू कहां से हुआ? ड्रामा शुरू हुआ बेसिकली हाई कोर्ट से. दैट इज क्या नाम है, कौन सा, मणिपुर हाई कोर्ट. मणिपुर हाई कोर्ट ऑर्डर्ड द गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर to recommend Metis in the ST list to the Tribal Affairs Ministry. वही प्रोसेस है. They recommended it. Immediately the all Tribal Students Union of Manipur. मैंने आपको बताया था ना, ये छात्र ही होते हैं वेल्ले पड़े हुए. All of the revolution because students, मैंने आपको हमेशा बताया, they are idealist. उनको लगता है हम दुनिया बदल देंगे, समाज बदल देंगे, एक बार हमें मौका तो मिलने दो. बट व्हेन यू गेट इन सर्विस तब आपको पता लगता है कि अगर किसी ऊपर वाले का कहना नहीं माना तो तुरंत ट्रांसफर होता है ऐसी जगह पे कि केवल फाइलें साफ करनी होती हैं. आप डीजीपी रैंक के ऑफिसर हो, क्या करते हो? फाइलें साफ करता हूं जी. दिस ऑफन हैपेंस विद अ लॉट ऑफ पीपल. अगर आपने बिहार डायरीज वाली सीरीज देखी होगी तो उसमें आपको पता लग जाएगा उसके कैसे ट्रांसफर्स होते हैं. और अब तो उसका टर्मिनेशन भी हो गया. ठीक है. सो दिस इज द थिंग. स्टूडेंट्स आर ऑलवेज आइडियलिस्टिक एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से अ डिक्टेटर fear only two people, students and intellectuals. Intellectuals have a lot of knowledge about history, polity. They can assess the society like a doctor.
They know what is happening in the society and what it can lead to. Students are so intellectual, उनसे थोड़ी सी बदतमीजी कर दो तुरंत धरने पे बैठ जाते हो. For example, who burned the throne of Indira Gandhi? किसी को आइडिया? Students of Gujarat. What happened? Indira Gandhi के टाइम पे there was a lot of inflation. तो इंजीनियर है, ऊपर से इंजीनियर, स्टूडेंट ऊपर से इंजीनियर. ठीक है, तो इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ गुजरात, द गवर्नमेंट इंक्रीज मेस फी, और कई लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है, आपकी बात अलग है, बट फॉर लॉट ऑफ पीपल थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाए तो उनका वाकई में बैलेंस बिगड़ जाता है. बिकॉज लॉट ऑफ पीपल कम फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, समहाउ दे आर डूइंग देयर स्टडीज, और वो भी इंजीनियर्स की आप बढ़ा रहे हो मेस बिल. वो आप सोचिए ना, फूकने के बाद कुछ तो चाहिए खाने में और उसमें आप उनका मेस बिल बढ़ा रहे हो. तो बस फिर क्या हुआ? They started the protest. That fire basically later on reached to the Jayaprakash Narayan, and he took over the movement. So the fire that burned Indira Gandhi's throne was started by the students of Gujarat. The fire that burned Afghanistan was started by Taliban. Taliban comes from the word Talib. Talib means student. These are the students of Islam. Majority of the world revolution अगर आप देखेंगे, बिना स्टूडेंट के कोई रिवोल्यूशन हो ही नहीं सकता. ठीक है, हर जगह यही कुछ ना कुछ कांड करते हैं, वेल्ले बहुत पड़े होते हैं ना. ठीक है, नहीं आप देखना, व्हेन यू विल गेट इनटू जॉब्स ना, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ में मरने जीने की कसमें खाई थी, उसकी शादी में जाने का टाइम नहीं होता कि भाई प्लीज मैं आने ही वाला हूँ बस. और वैसे अभी वो फोन कर दे तो अभी पहुंच जाओगे, हाँ भाई क्या काम है, कुछ नहीं चलो बैठते हैं. ठीक है, that's the difference that comes. So student union of Manipur started the protest against the inclusion of Metis into the ST list, and this is the fire that was unleashed, and that led to May 4 event, that girls wala event that you saw. अब उसकी एक अलग कहानी है, ये तो मेन इवेंट है. That is a side event, and why that happened? Because there was a guy. I told you social media and this are very dangerous now, and how they work, they radicalize people. How they radicalize people, I think previous class I may have told you. I hope you have all seen YouTube and all. What happened? You see a particular video on YouTube, any kind of video. मान लेते हैं you are seeing a radical video. अपने लिए क्या था कि उन्हें इंक्लूड ना किया जाए. हाँ, उन्होंने कहा था ट्राई कि मेथीज को आप एसटी लिस्ट में मत डालो, क्योंकि अगर वो एसटी लिस्ट में आ गए तो हमारा क्या फायदा. They will basically capture. So basically YouTube, how does it work? You watch a video of any nature, doesn't matter it is true or false. The YouTube algorithm is like the second video, if you have seen in suggestions, is a similar nature. This is the problem, that you see a video, मान लेते हैं it's a false video, some Muslim is giving a radical statement against Hindus. यार बहुत बेवकूफ हर जगह मिलते हैं, हिंदूज भी तो होते हैं ऐसे बहुत से, मुस्लिम भी होते हैं, क्रिश्चियंस भी होते हैं. तो आपने वो वीडियो देखी, next video will be based on same algorithm, क्योंकि it is based on the people who watch same stuff. Next video will be same, next video will be same. It creates a kind of loop, and this loop radicalizes people. After a point of time, it doesn't matter how sensible you are, for you that community will become a parasite, that a cockroach that must be killed, and that's dangerous. Exactly that happened with those girls. What happened? A guy made a video in which he said he took some picture of, I think, क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान और यूपी. There was a girl who was honor killed by their family. Honor killing आपको पता है, the family does honor killing. So she was killed by her family itself. He took that picture and he circulated that picture with a video saying that this is a Methi woman raped by Cookie man. It spread like wildfire in the Manipur, and as a retaliation for that, सोचिए 800 to 1000 men, they went to that village, they burned down the houses, they captured the woman, they basically paraded her naked and then they raped her. This all happened. इसलिए नहीं हुआ कि because they were enjoying the process. It was to punish cookies. देखिए how patriarchy works. You want to punish a community, so you're punishing their woman as a symbol. And it started with Rwandan genocide. अगर आपको थोड़ा idea हो, Rwanda में when genocide took place, they intentionally mass raped a woman. 1000 to 1000 people raped a single woman. और किस लिए rape किया था? Not because they wanted to do something, just because they wanted to destroy their lineage.
इतना हेटेड था उनके अंदर. एंड दिस इज हाउ पेट्रियार्की वर्क्स. बात समझ में आ रही है? लेकिन सब में दोषी कौन है? मैं फिर कह रहा हूँ, सब में दोषी सिर्फ इंडियन मीडिया है. देखिए, द मैन हु डिड दिस एंड द वुमन हु सपोर्टेड देम. मेतीज में एक मणिपुर में एक ग्रुप होता है मीरा पाइबी. मेतीज में मीरा पाइबी. It's a woman group. It was created in 1970s. This group was created against alcohol, drugs and all. मणिपुर में अल्कोहल ड्रग बहुत ज्यादा होता है, ड्रग बहुत ज्यादा है, बिकॉज म्यांमार के पास में है ना वो. म्यांमार इज नोन एज द गोल्डन ट्रायंगल. इट्स अ हब ऑफ ड्रग. तो मणिपुर में ड्रग बहुत ज्यादा है. बिकॉज ऑफ दैट अ वुमन ग्रुप वाज क्रिएटेड इन 1970 known as मीरा पाइबी, known as mother of Manipur. So these women, what they do is they have a coalition. They go to place and anyone who was found in drugs, they used to shame them publicly. तो इससे क्या हुआ? लॉट ऑफ पीपल इधर कमिटेड सुसाइड और लीव द ड्रग, क्योंकि जो ड्रग छोड़ नहीं पाया सुसाइड कर लिया एंड अदर पीपल लेफ्ट द ड्रग. सो देखिए, दिस ग्रुप वाज क्रिएटेड फॉर नोबल कॉजेस एंड इनिशियली इट हैड एवरीवन. मेथीज, कुकीज, नागा सब थे इसके अंदर. ओवर टाइम व्हाट हैपेंड, दिस ग्रुप बिकेम डोमिनेटेड बाय मेथीज ओनली. और जो आपको क्राइम में बता रहा हूं इनकी मदद से हुआ है. सो यू कैन नॉट ब्लेम मैन ओनली. देखिए, डीह्यूमनाइजेशन वर्क विद एवरीवन. एंड व्हाट हैपन, ये क्या करते हैं, वेन एवर आर्मी एंड एवरीवन कम्स टू सेव, वो एक चेन बना लेते हैं. अब प्रॉब्लम आर्मी के साथ एक है कि आर्मी में वुमन नहीं है. आर्मी के साथ इशू क्या आता है, आर्मी में वुमन नहीं है. द लोकल पुलिस इज बायस्ड इन फेवर ऑफ मेथीज. लोकल पुलिस फेवर में किसके है? मेथीज में. वो हमेशा होता है. देखिए, पुलिस वाले आसमान से तो गिरे नहीं है. द पुलिस पर्सन आर एम्बेडेड इन द सोसाइटी ऑफ इट्स टाइम. उनकी वही बायसेस हैं जो आप में मिलते हैं, सेम बायसेस हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉमन दैट अ माइनॉरिटी पर्सन will be stopped for checking and arrested has multiple time high chances than a majority person. चाहे किसी भी देश में चले जाओ. In America, the chances that a black person car will be stopped, he will be searched or will be put in detention is number of times higher than a white person. And it is with every country, because every country में you consider some people as troubling. And media plays a role. मैंने आपको बताया था, they create sentiments. अब सोचिए, जो भक्त बने हैं मीडिया, who is showing one community as the problem, क्या पुलिस वालों को वो नहीं दिख रहा? So for those policemen also that community will be a problem. And same this Metis, this policemen in Manipur, they are also Metis, majority of them. They are the part of the society. So they have the same biases. This is the problem in Manipur. Methi police is with Metis. The armed forces sent by the Union and the Assam Rifle, paramilitary forces, they are protecting the cookies. अब वहां पे ये प्रॉब्लम होगी, कुकीज आर सपोर्टिंग द इंडियन आर्मी अपोजिंग द मेथीज, मेथी पुलिस. द मेथीज आर सपोर्टिंग द मेथी पुलिस अपोजिंग द इंडियन आर्मी. एंड हु दे यूज? मीरा पाइबी. जब भी कहीं पे कुछ कांड करना होता है इन्हें, मीरा पाइबीज क्रिएट अ चेन. और कुछ वुमेन स्टार्ट टू स्ट्रिप देमसेल्फ, नेकेड होना शुरू हो जाती हैं. अब आर्मी ऑफिसर क्या करें बेचारे? सोचिए, पहली बार हुआ है कि आर्मी हैड टू ट्वीट अ वीडियो. पहली बार आर्मी ने एक वीडियो ट्वीट करके बोला कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा. अब वो क्या करते हैं? और उनके पास दे हैड सम टेररिस्ट, सम इंसर्जेंट जो अरेस्ट किए हुए थे. दीज मीरा पाइबीज फोर्सफुली रिमूव्ड देम. There were some terrorists earlier who were arrested by the Assam Rifle and all. They were in detention. These Mira Paibis attacked the army convoy and they freed all those terrorists. So ये main reason. So you cannot blame the man only in this case. It's a systematic genocide. और इसका blame किस पे जाएगा? Directly देखिए जाएगा तो प्रधानमंत्री पे ही. Because Article 355 of the Constitution, Article 355 of the Constitution clearly कहता है, it is the duty of the union to protect the state from internal dissent or external aggression. It is the duty, not power. It is the duty of the union to protect the states from internal aggression and internal disturbance and external aggression. Using this power, the Modi government can impose president rule anytime it wants. पर फिर वो कर क्यों नहीं रहे? टू रीजन. पहला तो सरकार भी नहीं किया. दूसरा एक और रीजन है, मेथीज मेजॉरिटी में है, दे आर हिंदूज एंड दे कंट्रोल द लेजिस्लेचर. आउट ऑफ 60 समथिंग सीट, 40 सीट्स आर विद मेथीज.
They are the most dominant community in Manipur. However, they are small in area. 90% area of Manipur is hill, dominated by Kukis and Nagas. Valley consists of 10% of total Manipur's area. और ऐसा होता ही है, आप हिमालयाज में देख ले, वैलीज जो होती है छोटी ही होती है, पर मेती कंट्रोल 40% of the legislature seat and they are Hindus. This is the problem. बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, मतलब ना दिखाओ जैसे एक ही बंदा तो नहीं है ना, इतनी बड़ी पार्टी को इतनी अकल नहीं है, एक बंदे में। देखिए आप बात समझिए, राजनीति भी, पर देखिए इसमें दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। अब ये बीजेपी का दोष आया ना, अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं। आपने नोटिस किया टाइमिंग ऑफ वायरलिंग ऑफ वीडियो जस्ट बिफोर मॉनसून सेशन? एक वीडियो आती है मॉनसून सेशन के एक दिन पहले, बिकॉज सबको पता है पार्लियामेंट आएगी। पार्लियामेंट में क्या होता है, द एंटायर मीडिया फोकस इन पार्लियामेंट, नॉट ओनली इंडियाज मीडिया, द वर्ल्ड्स मीडिया फोकस इज ऑन पार्लियामेंट। उसके एक दिन पहले वायरल होती है। मुझे फीलिंग तो यही है कि अपोजिशन के पास, ये अपोजिशन मतलब मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, जो भी पार्टी ने ये काम करा है उनके पास ये वीडियो पहले से होगी। वो वेट कर रहे थे पार्लियामेंट के सेशन के आने का। तो मैंने आपको पहले भी समझाया, और पॉलिटिशियंस आर लाइक सेम, दे आर नार्सिसिस्टिक सोशियोपैथ। तभी तो वो क्रोकोडाइल वाली इमेज बनाई थी। लिटरली दे डू, आई डोंट नो इफ पेन होता भी या नहीं होता, दे आर डिफरेंट क्लास एंड ऑल CEOs वगैरह वो भी ऐसे ही होते हैं। फॉर एग्जांपल मार्क जकरबर्ग, फेसबुक फाउंडर, व्हेन ही स्टार्टेड हिज कंपनी ही रोट ऑन हिज विजिटिंग कार्ड और समथिंग, आई एम द CEO बिच। व्हाट वाज दिस? एन स्टेटमेंट ऑफ एरोगेंस, कि देखो मैं कहां हूं, अपने आप को देखो। एंड ऑल मार्क जकरबर्ग, आपका ये टेस्ला का एलॉन मस्क, दीज ऑल आर नार्सिसिस्टिक सोशियोपैथ एंड सो डज पॉलिटिशियंस। सबको समझ में आ रहा है व्हाट इज हैपनिंग हियर? दिस ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ अ फेक वीडियो मेड बाय अ गाय एंड एज अ रिटेलिएशन दे वर ट्राइंग टू मेक एन एग्जांपल आउट ऑफ इट। पर ये सारा दोष किस पे जाएगा? सिर्फ और सिर्फ मणिपुर के CM पे जाना चाहिए। उस पर मैंने शायद पहले भी बताया, इरशाद निश्चित इरशाद हम शायर वायर है, उनका बहुत अच्छा है स्कोप। देखिए इट्स हाई टाइम कि मणिपुर की सरकार को जाना चाहिए। मैंने पहले भी समझाया है, 1984 के रॉयट्स की जिम्मेदारी राजीव गांधी की बनती है। 1984 Sikh genocide. Government called it riots. It was not a riot. It was a genocide. The Sikh genocide, the responsibility falls on Rajiv Gandhi because he was the prime minister. He may not be legally culpable, but morally he is responsible. जैसे और सेम केस में 2002 के रॉयट्स की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की बनती है। He may not be involved, he may not be legally culpable, but he is morally culpable because you were the CM. And so does in Manipur the all responsibility of this 1,000 people dying and million. For example, this case में when आज तक journalist पता नहीं कैसे पूछ लिया उन्होंने, they asked him कि sir this happened, what you were doing, why it's so late? He said आपको एक केस दिख रहा है, ऐसे हजारों केस हैं। इसका रिप्लाई भी जबर देखिए, ही सेइंग, ये नहीं कह रहा मैं एक्शन लूंगा, ये कह रहा है यू आर सीइंग वन केस, ऐसे तो हजारों केस है मेरे पास, किस पे एक्शन लूं? ठीक है क्या? अरे नहीं, देखिए उनकी प्रॉब्लम समझिए, अगर ये वायरल नहीं होती तो करते भी नहीं। मतलब उनका रिप्लाई भी तो कितना जबर देखिए, यू आर जस्ट सीइंग वन केस, आई हैव 1,000 सच कंप्लेंट ऑफ मास रेप्स, किस पे मैं एक्शन लूंगा? तो बेसिकली जैसे वो शायरी मैंने बताया था मैम, कुर्सी है ये, तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? इट्स हाई टाइम, अब उतर जाओ भाई, हो गया तुम्हारा को देख लिया सबने। बट ऐसा होगा नहीं, बिकॉज मैं फिर बोल रहा हूँ इसमें सब में सिर्फ एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है, इंडियन मीडिया। अगर इंडियन मीडिया 2 महीने से सरकार की गर्दन पे बैठा होता, इफ इंडियन मीडिया वुड बी शोइंग दिस रेदर देन शोइंग कि ये कौन है लड़की जिसका केस चल रहा है, सीमा हैदर समथिंग, उसके फेक केस में लगे हुए हैं, उसके जीन्स का भी इन्होंने एनालिसिस कर लिया होगा। लेकिन यहाँ पे आपके ही एक राज्य में इतनी बड़ी एट्रोसिटी हो रही है एंड यू आर डूइंग नथिंग। You're getting the point. I always say there is no threat to India except India's media. And you see any country which is high on press freedom is high on every indicator. Every socioeconomic indicator, happiness, hunger, in every indicator, a country which is good in press freedom is good in every other indicator. That's why Nordic countries, Finland, Sweden, वगैरह, they are always top in every indicator because they are in top in press freedom. A free press serves the people. A dependent press serves the government against the people. सबको समझ में आ रहा है? तो these all are ethical debate and you got, this is the part of internal security. Clear to everyone? बाकी आप देख लेना। ये पोजीशन पे तो इतनी सारी पार्टीज है ना, और एक पार्टी में
डिपार्टमेंट होंगे और ये ब्यूरोक्रेट्स भी हैं बहुत सारे और Yes. कोई तो होगा ना जो डंका होगा दूल्हा, मतलब कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब एक ही जैसे। ठीक है, मुझे आपकी फ्रस्ट्रेशन समझ में आ रही है, तो मैं आपको, अरे हंसो मत प्लीज, राइट, मैं आपको समझाता हूँ रीजन क्या है। तो फ्रस्ट्रेशन आप फील कर रहे हैं ना कि यार कुछ कर क्यों नहीं रहा कुछ। मैंने आपको एक केस बताया था, आपने सर्च किया था, रुचिका गिरिहोत्रा केस। रुचिका गिरिहोत्रा केस है, कौन बोला? हाँ, वो आईपीएस वाला रुचिका गिरिहोत्रा। चलो ये तो सरकार है, इसका एग्जांपल लेते हैं। रुचिका गिरिहोत्रा को प्लीज डू गूगल इट, इट्स अ गुड एथिकल केस स्टडी, डू दिस फॉर श्योर। इट्स अ क्लासिकल केस ऑफ अब्यूज ऑफ पावर। रुचिका गिरिहोत्रा, ठीक है, शी वाज अ स्कूल गर्ल. What happened, there was a high ranking IPS officer. He used to drop his daughter to the school. In the same school there was a girl called Ruchika Grihotra. He molested her. So she went to the home and told to her parents कि मेरे साथ ऐसा हुआ. ठीक है, her parents registered an FIR and the parents were also well off because they were living in the same community. जिस कम्युनिटी में, जिस लोकेलिटी में वो आईपीएस रहता था, उसी लोकेलिटी में वो लोग भी रहते थे. इसका मतलब दे वर नॉट पुअर पीपल, दे वर रिच एंड कनेक्टेड. So what happened, this girl revealed her ordeal to her parents. They filed an FIR that high ranking IPS officer abused his power. He harassed her and her family to the extent that कई बार होता है ना, आपके सिबलिंग्स भी आपसे उल्टा सीधा बोल जाते हैं. They do not mean it but out of anger they say it. So her siblings said something to her कि तेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, and she took so affront, she committed suicide, and that IPS officer was never punished. क्यों? अब ये तो बड़ा केस था, यहाँ पे तो मोदी सरकार को ब्लेम कर सकते, वहां तो मोदी सरकार भी नहीं थी. व्हाई इट हैपेंड? आप खुद सोचिए, वो हाई रैंकिंग आईपीएस है, उसके नीचे कई सारे आईपीएस होंगे, वुमन आईपीएस भी होंगी पक्का, उसके ऊपर भी कई सारे आईपीएस होंगे. आईपीएस छोड़ो, सरकार भी थी, आईएएस भी थे. देन व्हाई नो वन टुक एनी एक्शन? बिकॉज दे सर्व. उसने किसी की मदद की होगी. कौन करता? अरे सरकार को समझे तो पनिशमेंट की बात है, उसे जेल में क्यों नहीं डाला, उसे सजाए मौत क्यों नहीं मिली? भाई चाइल्ड को मोलेस्ट किया है आपने, बड़ी बात है, और आपकी वजह से सुसाइड कर लिया उसने, अबेटमेंट सुसाइड केस भी बनता है इसमें, उसे पनिशमेंट क्यों नहीं मिली? बिकॉज उसने कभी ना कभी किसी की फाइल पास कराई होगी. आप समझ रहे हैं? उसने बोला होगा अगर मैं गया तो तुम सबको लेके जाऊंगा. He must have threatened कि if I go down then I will make sure that all of you go down. मैं वो फाइलें खोलूंगा जो तुमने मुझसे पास करवाई थी, वो कांड दिखाऊंगा जो तुमने करे हैं. तो बात ये है, जब सिस्टम में आप एक दूसरे की मदद कर रहे होते तो कोई एक्शन नहीं लेता. गेटिंग द पॉइंट? सेम मणिपुर का केस है. मैंने आपको समझा, इससे पहली वाली न्यूज हमने समझी थी, द कनेक्शन वर्ल्ड. पॉलिटिशियन सर्व्स द कॉर्पोरेट, the corporate serves the politician by controlling the media and make sure media never raises the question against the government. It's like a nexus, a big nexus. It need to be broken. और इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? अपोजिशन के ऊपर. अब हम क्या कर सकते हैं इतना ज्यादा? बात समझ में आ रही है? तो इट कैन नॉट चेंज विदाउट, और ये सब कब चेंज होगा? जब प्रेस फ्रीडम आएगा. मैं आपको गारंटी करता हूं, जिस दिन इंडिया में फ्रीडम ऑफ प्रेस में हम ऊपर गए, हर इंडिकेटर में हम ऊपर हो जाएंगे, एवरी सिंगल इंडिकेटर. और उसके लिए थोड़ी जनता को भी सेंसिबल होना पड़ेगा. स्टॉप रिजॉइसिंग एनकाउंटर्स एंड जेसीबी जस्टिस. जब एनकाउंटर्स होता है वी फील बड़ा हैप्पी, हाँ ये बढ़िया काम हुआ. दैट एनकाउंटर विल नेवर एम्पावर यू. एनकाउंटर से सिस्टम सुधर जाएगा. मान लेते हैं अब पर्सन कमिटेड अ हीनियस क्राइम, यू एनकाउंटर्ड हिम. Would that encounter empower a woman fighting against a minister against a sexual assault? क्या उसे जस्टिस मिल गया उससे? और यही बात निर्भया केस में हुई थी. निर्भया केस, you all know Delhi case. The lawyer who was supporting those rapists, he said one thing, he said right, बाकी तो he was a patriarch out. ठीक है, बेवकूफ था. बस एक चीज ने सही बोली थी, you are hungry for the blood of these guys not because they are rapists but because they are poor. If they would have been connected political class elite, then you would vote them in parliament the way you have voted the existing people. पार्लियामेंट में 24% लोग पे क्रिमिनल केस है, 12 पे लगभग हीनियस क्राइम, मल्टीपल रेप्स एंड मर्डर के केसेस हैं, और वो पार्लियामेंट में जेड क्लास सिक्योरिटी से बैठे हैं आपके पैसे पे. बात समझ में? इफ यू कीप ऑन चूजिंग सच पीपल तो फिर कैसे बदलाव आएगा? Why would they reform the justice system when they know that justice system will catch them? बात तो वो कबीर वाली बात सही होगी ना, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, मन जो जाका आपना तो मुझसे बुरा ना कोई.
change the voting pattern. You love a party, be it, but vote only the person who is not tainted. If you keep on voting tainted, तो फिर यही होता रहेगा. क्लियर है? आपकी बात समझ में आई? तो थोड़ा अपने बारे में भी सोचना चाहिए. चलिए आगे देखते हैं. Next news that we have about is National Multidimensional Poverty Index. Now, what it is about? It's a good news also for Modi government. So, what is multidimensional poverty? Usually, government understand poverty in the context of less income. Basically, the income below which you cannot support basic necessities. What is poverty line? An income below which you cannot support basic necessities. But this is not a good measure of poverty. Because देखिए poor केवल income से नहीं होता, सोच से भी होता है. There are numerous parameters of poverty: health poverty, mental poverty, ठीक है, regional poverty, gender poverty. There are numerous kind of poverties. So that is what we try to evaluate in multi-dimensional poverty index. In this, we take various parameters: the access to health, the access to education, the living standard, not only the income, but other parameters also: good water, safe environment, sanitation, all these parameters which are necessary, which may not be directly related to income, but they enhance quality of life. Such kind of poverty calculation is known as multi-dimensional poverty index. This much is clear to everyone. चलो जल्दी से देख लेते क्या हुआ है. The Niti Aayog has published a report known as National Multidimensional Poverty Index, a progress review 2023. About multidimensional poverty मैंने आपको बता ही दिया. It is not only the lack of money but also lack of clean water, nutrition, health, education, work and numerous parameters are there. ठीक है. Let's see what is National Multidimensional Poverty. Indicators क्या है? आपको ये याद रखना पड़ेगा. ये तो 3 याद रखेगा. एक बार को you can forget the indicators but remember the dimensions within the index. The dimensions are health, education and standard of living. Within this there are numerous indicators. These are dimensions. Within dimensions there are indicators. जैसे for example in health you have nutrition, child and adolescent mortality and maternal health. In education you have years of schooling and school attendance. In sanitation, in standard of living you have आपका cooking fuel, sanitation, drinking water, housing, electricity, assets. इसमें देखिए एंड में एक चीज हमने ऐड करी है, बैंक अकाउंट. 2 इंडेक्स होते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में. 2 इंडेक्स है. एक इंडेक्स पब्लिश करा जाता है यूएनडीपी के द्वारा. देयर 2 इंडेक्स विद इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी. One index which is global multidimensional poverty index, it is published by UNDP, United Nations Development Program. The national MPI is published by Niti Aayog. Okay, remember the difference. The global is published by UNDP, the national is published by Niti Aayog. The difference between both is these two. In global MPI, this red wala is not present. In global MPI, maternal health is not counted and bank account is not counted. In national MPI, the remaining parameters of global MPI is present. Extra 2 parameters are there: maternal health and bank account. नहीं है उसमें ये 2 कंपोनेंट नहीं. जो लाल में लिखे हैं ना, ये नेशनल एमपीआई में काउंट कर रहे हैं. क्लियर टू एवरीवन? चलो, तो ये प्लीज रिमेंबर दिस फिगर, स्पेशली रिमेंबर दिस डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पैरामीटर्स एंड द रिमेनिंग पैरामीटर्स. चलिए, सो व्हाट इज द पर्पस? द नीति आयोग पब्लिश दिस टू अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस ऑफ states and UTs. How good or how bad our states and UTs have worked on multi-dimensional poverty वाला criteria. मैंने आपको बताया दिया था इसमें 2 न्यू इंडिकेटर है, मेटल हेल्थ और बैंक अकाउंट्स. सब इंडिसेस, रिमेंबर दिस टर्म, एल्कायर फोस्टर मेथड. द ग्लोबल एमपीआई, we have taken the same method. Global MPI published by UNDP has some parameters which I told you. National MPI has 2 additional parameters: maternal health and bank accounts. And the method that is used in both indicator is known as Alkire-Foster method. In this, what we do, we evaluate the deprivation in various indicators and we created a weighted average. अगर आपको weighted average का idea होगा, weighted कैसे होता है?
कमोडिटी मान लेते हैं x, उसकी वेटेज मान लेते हैं 1/3 प्लस y इंटू 1/2 जो भी होता है ऐसे करके, एंड देन वी डू द एवरेज. एक होता है नॉर्मल एवरेज, वी सम ऑल द क्वांटिटीज डिवाइड बाय द नंबर्स. दूसरा होता है वेटेड एवरेज, इन दैट वी मल्टीप्लाई द क्वांटिटी विद द वेट वी असाइन इट एंड देन वी डू द एवरेज. सच काइंड ऑफ एवरेज इज कॉल्ड वेटेड एवरेज. तो एमपीआई इज अ वेटेड एवरेज. सबको बात समझ में आई? एमपीआई इज अ वेटेड एवरेज. वही ये बात लिखी हुई है, वेटेड एमपीआई indicators. ठीक है. After doing this, anyone who achieves the score more than 33.33, anyone who achieves a score of more than 33.33 or 1/3 of all indicators is considered multidimensionally poor. Out of all the indicators I showed you previously, I will evaluate in how many indicators you are deprived. And if you achieve the score of more than 33.33%, means out of all the indicators, if you're deprived in more than 1/3 of the indicators, then you are a multidimensionally poor. Clear hai? Please remember all these criteria for sure. Important for prelims particularly. Mains mein poverty and inequality, GS paper 3. ठीक है. Within MPI now we have two kind of ratios. Let's see them. पहला है head count ratio. Head count ratio talks about how many poors are present. It is the amount है, amount लिखा हुआ, T उसमें गायब है. How many people are poor? That is called head count ratio. Basically, it is the total number of poor within the total population. सबको समझ? head count मतलब the number of heads you can count. So the number of people who are MPI based poor are basically head count ratio. MPI based poor divided by total population. MPI, oh sorry, head count. Intensity of poverty. Intensity of poverty talks about how poor are they. So head count ratio talks about how many are poor. Intensity of poverty talks about how poor are they. जितने भी हैं वो किस हद तक पुअर है. और उसके बाद वो इसमें देखिए वेटेड एवरेज डेप्रिवेशन स्कोर को पुअर इंडिविजुअल डिवाइड कर देते हैं सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ पुअर इंडिविजुअल. वेटेड एवरेज स्कोर, टोटल वेटेड एवरेज स्कोर डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पुअर. इससे आपको लग जाएगा कितनी पॉवर्टी है. मान लेते हैं इसे डिवाइड करने के बाद आया 66%. इसका मतलब व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी? 66%. जो पुअर हैं वो कितना पुअर है? 66% डिप्राइव्ड है वो. समझ में आया दोनों में फर्क? चलिए. और उसके बाद एमपीआई वैल्यू कैसे मिलती है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. मल्टीप्लाई हेड काउंट रेशियो विद इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, यू गेट एमपीआई. क्या ऊपर क्या लिखेंगे? जो हमने एमपीआई का वेटेड एवरेज नहीं निकाला, मैंने आपको बताया नहीं था वेटेड एवरेज. मान लेते हैं हेल्थ को मैंने दिया है 1/3 क्राइटेरिया, ठीक है. एजुकेशन को मैंने दिया है फॉर एग्जांपल 1-2 क्राइटेरिया. इस तरीके से मैं वेटेड एवरेज निकालूंगा, ये ऊपर आएगा और नीचे डिवाइड होगा पॉपुलेशन से. जो वेटेड एवरेज हम निकाल रहे हैं वो ऊपर आएगा, ताकि ये बताने के लिए किस हद तक पॉवर्टी है. क्लियर? तो एमपीआई कैसे निकलता है? बाय मल्टीप्लाइंग हेड काउंट रेशियो विद ए. ए इज द इंटेंसिटी. हेड काउंट रेशियो मींस हाउ मेनी आर पुअर. इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी मींस हाउ मच पुअर आर दे. चलिए. सो दिस आई हैड. अब इसमें जल्दी से देख लेते हैं कि रिपोर्ट क्या कहना चाहती है. दिस रिपोर्ट हाइलाइट्स, इट इज अ सेकंड एडिशन, दिस हाइलाइट्स दैट इन इंडिया एमपीआई हैज बीन डिक्रीजिंग. तो नीचे होगा नेशनल एमपीआई. यहाँ पे ये फिगर आप पढ़ लेना, बाकी मैं इसे बता देता हूँ. इंडिया हैज मेड significant progress in reducing MPI. The percentage of MPI poor have gone down in India from 24 to लगभग 14. Absolute figures are not important. Remember a rough idea that 25 से कितना पहुंच गए हैं? 15 पहुंच गए, क्योंकि 96 है ना. ठीक है. 14 भी बोल दोगे चलेगा. We do not need absolute figures. ठीक है. We only need rough idea. So how much of India is multidimensionally poor? Around 14 to 15%. Clear? How much of India is multidimensionally poor right now? Around 14 to 15%. Remember that. The rural area have experienced most rapid reduction. ये तो कॉमन सेंस है, जो जितना पुअर होता है उतना ही ज्यादा रिडक्शन होगा. रूरल एरिया में पॉवर्टी ज्यादा है एंड बिकॉज ऑफ दैट रिडक्शन भी ज्यादा ही होने वाला है. ठीक है. और कितना है? लगभग 20.
तो एवरेज हमारा 15 बन रहा है, लगभग 20 रूरल में है। अर्बन एरिया में भी विटनेस हुआ है, लगभग कितना पहुंच गया है 5.5 मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ठीक है, सबसे बढ़िया प्रोग्रेस किसकी रही? उत्तर प्रदेश की। क्यों रही? वही रीजन, जो जितना बैकवर्ड होता है उतना एफर्ट उस पर ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। जितना आप फॉरवर्ड होते जाते हो उतना एफर्ट ज्यादा लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके केस में जब नए नए आते हो तो आप जल्दी से पढ़ना शुरू करते हो, तो अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ नॉलेज यू एक्यूमुलेट। उसके बाद जितना आप आगे बढ़ जाते हो फिर क्या होता है, बहुत सारा एफर्ट लगाने के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा आगे बढ़ते हैं। आप 0 से 80 पे पहुंच जाओगे, 80 के बाद 90 पहुंचने के लिए 3000 गुना ज्यादा मेहनत लगती है, 90 से 100 पहुंचने के लिए 10,000 गुना ज्यादा मेहनत लगेगी। 0 to 80 में कम मेहनत है, पास में इनिशियली मेहनत कम लगता है। सेम चीज है, बिकॉज उत्तर प्रदेश हैज द लार्ज, उत्तर प्रदेश एंड बिहार हैव द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ पॉवर्टी, हाई बैकवर्डनेस, and because of that even a small effort appears a significant one, but nonetheless it's a very good news for उत्तर प्रदेश। काम तो हो रहा है कम से कम, बिहार का तो नाम भी नहीं आया इसमें। आया 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 बिहार का भी नाम है। देखिए सारी स्टेट कौन सी है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। These are known as बिमारू स्टेट्स। इनका एक एक्रोनिम बनाया गया था, बिमारू। बिमारू स्टेट इज एन एक्रोनिम व्हिच रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ हैविंग लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स। बिमारू में आई थिंक कौन कौन था? बिहार, मध्य प्रदेश, इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिक्स वगैरह। इकोनॉमिक सर्वे में भी मैंने आपको बताया हर बार नए नए आइडियाज कौन होते हैं। जैसे पिछली बार थालीनॉमिक्स कॉइन हुआ था, थालीनॉमिक्स, द इकोनॉमिक्स ऑफ अ थाली। ठीक है, मतलब बेसिकली हाउ मच यू स्पेंड टू हैव अ थाली ऑफ फूड, दैट इज कॉल्ड थालीनॉमिक्स। हर बार जैम ट्रिनिटी है फॉर एग्जांपल, जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी, ये भी इकोनॉमिक सर्वे ने कॉइन किया था। तो इकोनॉमिक्स करते रहते हैं, वेल्ले बड़े ना कुछ करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम, द गवर्नमेंट स्कीम विच आर वर्किंग, एवरी सिंगल स्कीम इज अ वेरी सिग्निफिकेंट वन। पहला पोषण अभियान एंड एनीमिया मुक्त भारत। Particularly I have told you earlier also, the biggest problem in India is nutrition, not lack of nutrition but malnutrition. You are eating food but you are eating junk food, you are not eating a comprehensive food that provides you all kind of nutrients. Particularly in women, what is the biggest problem? IV, iodine, vitamin, iron. These three things are the biggest problem in women. Anemia, ये सबसे ज्यादा होता है, iodine, vitamin, iron. And who is responsible for this? ये क्यों होता है? एक तो सरकार भी रिस्पॉन्सिबल है। एक नया ट्रेंड चला है बेबो कल्चर, मैंने आपको समझाया था प्रीवियस क्लासेस में। अरे बेबो नहीं है, क्या नाम है उस लड़की का, करीना। तो बेसिकली द कल्चर इज you want to look petite because right now petite is considered as a standard of beauty. मोटा नहीं पसंद करते, petite is considered standard of beauty and that's the problem. That's what World Bank highlights and WHO report highlights, that in India the average weight gain by a woman in pregnancy is around 9 kgs, जबकि standard suggested is 18 kgs. So in India, either women do not start pregnancy at good weight or they do not gain proper weight, and that's why maternal mortality is high in India. So it is not only governments at fault, it is also the people's fault. This culture is destroying things. Clear to everyone? सेम है आपका चिल्ड्रन न्यूट्रिशन में आता है। चिल्ड्रन न्यूट्रिशन में भी सेम प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी चिल्ड्रन न्यूट्रिशन में क्या प्रॉब्लम आती है? ट्रॉपिकल एंट्रोपैथी। ट्रॉपिकल एंट्रोपैथी is a disease, is a outcome of a disease. When you get ill often, what happen, your stomach and your body starts to avoid food. जब बार बार बीमार पड़ते हैं ना, तो your body's ability to absorb nutrient from the food decreases. और रूरल एरिया में बहुत बीमार पड़ते हैं। इस बात में यू कैन प्रेज मोदी गवर्नमेंट्स एफर्ट, दैट इज स्वच्छ भारत मिशन। ये बहुत जरूरी था। ओपन डेफिकेशन इज डेंजरस बिकॉज यू नो व्हेन यू ओपनली डेफिकेट क्या बोलते हैं, the flies sit over it, then the same flies sit over your food, and you people, आपको तो कचरा खाने की आदत हो गई है, हमें भी हो गई है, लेकिन the small kids who are just born, these kids do not have that immunity that we all have. हमने तो पता नहीं क्या क्या खाया हुआ जिंदगी में, तो हम सब में इम्यूनिटी आ गई है, लेकिन जो किड जो नए नए पैदा उनमें नहीं होती इम्यूनिटी। So what happened, that fly sits on the defecate and then it sits on the food. तो you eat, आप तो immunize हो चुके हो, तो आप झेल लेते हो। The small kid, they are unable to digest it and they get ill often. Diarrhea सबसे ज्यादा होता है उन्हें,
बिकॉज ऑफ दिस, और मल्टीपल टाइम व्हेन यू गो फॉर अ डिजीज आपको क्या हो जाता है, ट्रॉपिकल एंट्रोपैथी। इस दोनों को बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या लाई, पोषण अभियान एंड अनीमिया मुक्त भारत, वेरी गुड इनिशिएटिव। वीकनेस है इनमें, वो एक अलग बात है। स्वच्छ भारत मिशन, अनदर वेरी गुड इनिशिएटिव। जल जीवन मिशन, basically providing water through pipe supply. Why is it so? Because the current problem with water is you have a ground. What everyone does is you tap the ground for irrigation and you tap the same ground for drinking water. This is the problem. You are tapping the same ground for two purposes, for irrigation as well as drinking water. When you irrigate, you extract water too much from the ground, and there's something called water table, the upper layer of water, it drops. समझ में आ रहा है? Because of green revolution it happened. You are extracting water out of the ground, and majority of the people use tube wells in India. They extract water from the ground and then they do flood irrigation. Because of this, when you extract water, the water table gets lower. The geogenic contaminants which are available at the bottom of the soil, they become available for drinking. इसलिए आपने देखा होगा इंडिया में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है नॉकनी। नॉकनी, द नीज जॉइंट्स आर ईदर टुगेदर और टू अपार्ट, और बहुत कॉमन प्रॉब्लम। इट हैपेंस व्हेन यू ड्रिंक अ वाटर हैविंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोरीन, फ्लोराइड particularly, cadmium, minamata. There are a lot of disease which happens from contaminated water, and it happens because you tap the same source for two purpose, irrigation as well as ड्रिंकिंग वाटर। इसलिए मोदी गवर्नमेंट क्या लाई, वैसे पहले से था, इसका नाम बदल दिया है जल जीवन मिशन। पर्पस क्या है इसका, टू प्रोवाइड पाइप्ड वाटर सप्लाई टू एवरी हाउस होल्ड थ्रू, इसे बोलते हैं नल से जल, नल से जल। क्लियर टू एवरीवन? दीज आर गुड इनिशिएटिव। अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ऑफ कोर्स द सिलेंडर वाला स्कीम, गुड इनिशिएटिव बट पार्शियली डन। सौभाग्य योजना, to provide electricity connection to every household. Right now, Government of India had दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति विद्युतीकरण योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। विद्युतीकरण means electrification. So government was trying to electrify every village, पर government की definition बड़ी अजीब है, that if 10% of the village household have electricity connection, it is assumed the entire village has electricity connection. है? ये आपके से लोग पढ़े लिखे जो आईएएस होते हैं वो डिसाइड करते हैं। देखो, दिमाग होना और उसे यूज करने में दो अलग अलग चीज होती है। होता तो सभी के पास है, डायलॉग में थ्री का होता सभी के पास है, पर यूज कोई नहीं करता। मैं बताता हूँ। नहीं मैं बताता हूँ। देखिए डेफिनेशन क्या है अंडर दिस, इफ 10% of the household have been given electricity connection, it is assumed the entire village is electrified, not energized. कनेक्शन है, बिजली आएगी गारंटी नहीं है, ठीक है, और वो भी 10% में। Why is it so? Because you take baby steps. समझिए, बेबी स्टेप्स लेते हैं, तुरंत नहीं करते सारे काम। एक तो इसलिए भी कि पॉपुलैरिटी अच्छी मिलती है, हेडलाइन आती है मीडिया में, नाउ इंडिया इज 100% इलेक्ट्रिफाइड अंडर द यशस्वी, यू नो दैट पर्सन, ठीक है, अंडर द गाइडेंस ऑफ विश्व गुरु, ठीक है। तो हेडलाइन अच्छी लगती है तो देखने में, और दूसरा रीजन ये भी है कि यू टेक बेबी स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में यू अचीव 10%, धीरे धीरे आप इसे बढ़ाते चले जाओगे, 10 से 20 पाओगे, 30 पाओगे। एक साथ अगर आप 100 रखोगे ना तो कहीं नहीं हो पाएगा। तो ये बताया हुआ है, हाँ आपको नहीं पता तो मीडिया की गलती है ना ये। आई एम टेलिंग यू, मीडिया आपको नहीं बता रहा है। ये सब तो देखिए गवर्नमेंट छुपा के थोड़ी ना कर रही है सारा। जब भी पॉलिसीज बनती हैं उनके डॉक्यूमेंट पब्लिश होते हैं गजट ऑफ इंडिया में, बिना सरकार आपको बताए कुछ नहीं कर सकती। कंपल्सन है अंडर, बिकॉज इट्स अ डेमोक्रेसी, एंड डेमोक्रेसी में विदाउट इन्फॉर्मिंग द पीपल द गवर्नमेंट कैन नॉट डू एनीथिंग। So they notify in the Gazette of India. अब the thing is मीडिया उसे नहीं दिखाती, वो एक अलग बात है। बात समझे? मैं फिर कहता हूँ हर चीज का सॉल्यूशन एक ही है, if we have a free media we can have a good country, without free media you will never have a good country। सोचिए हमारे रेसलर्स, वो तो कनेक्टेड लोग हैं, they are connected people, सोचिए उनकी क्या हालत है। अब सोचिए नॉर्मल व्यक्ति की क्या हालत होगी, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन? चलिए
तो इसीलिए सौभाग्य लाई गई थी। सौभाग्य क्या है? अंडर प्रधानमंत्री ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, इफ 10% ऑफ द households have connection to electricity, it is assumed the entire village is electrified. अब now the remaining households will be electrified using सौभाग्य। तो फर्क क्या हुआ? That scheme covers at the level of village, this scheme covers at the level of household। क्लियर? उसके अलावा और भी स्कीम आपका प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना एंड समग्र शिक्षा अभियान, कंप्लीट एजुकेशन स्कीम। क्लियर? दीज ऑल स्कीम्स आर कंपल्सरी टू बी डन एंड इन डिटेल। मेरे पे टाइम की लिमिटेशन इसलिए नहीं करवा रहा मैं, बट ऑल स्कीम्स यू मस्ट डू इन डिटेल। इनमें से एक एक स्कीम को आप कैसे करेंगे? नो द कंपोनेंट ऑफ द स्कीम, लिमिटेशन, वीकनेस, efficiency, everything you need to know। ये सारी स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। नो एक्सक्यूज इन दीज स्कीम्स। क्लियर? ज्यादा नहीं है, गिनी चुनी स्कीम है, कंपल्सरी यू नो एवरी सिंगल डिटेल अबाउट दिस स्कीम इन डिटेल। क्लियर? सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा दीज आर अदर इंडिकेटर, ये पब्लिश करता है एक्सपोर्ट, इनोवेशन वगैरह वगैरह। प्लीज रिमेंबर देम, प्रीलिम से पूछा जाता है हु पब्लिश दिस इंडिकेटर, हु पब्लिश दैट इंडिकेटर। ठीक है? तो प्लीज रॉट लर्न देम। डिटेल, इनकी डिटेल मत पढ़िएगा, दीज इंडिकेटर्स में डिटेल नहीं पढ़ना, बट रिमेंबर विच हाउ मेनी इंडिकेटर्स आर पब्लिश बाय नीति आयोग। डू नॉट गो इन दैट डिटेल, नॉट रिक्वायर्ड। क्लियर? चलिए, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ, फिर हम अगली पे आते हैं। पोंगयांग सो लेक, पोंगयांग सो लेक, आई थिंक ये वही लेक है जहां पे वो क्या नाम है उसका, 3 इडियट मूवी का जो लास्ट सीन है शायद इसी लेक का तो है शायद। वो लद्दाख, हाँ लद्दाख में तो है, तो कहाँ पे है फिर? इसी का है, मुझे आइडिया नहीं, इसी का है जहाँ मुझे याद आ रहा है, कोई नहीं। पोंगयांग सो लेक, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस लेक? द प्रॉब्लम विद दिस लेक इज, मैप कहाँ गया इसका? मैप देख लीजिए आप सब लोग ऐसे। तो दिस इज हाउ दिस लेक इज देयर। दिस लेक बेसिकली ranges from here and it is on the Chinese border। ठीक है? These things are called fingers। ये जो होता है आपका, where the Himalaya slope, where the mountain slope and the edges kind of creates, these are called fingers। ठीक है? तो they are different fingers which is in the second map if you see, finger 1, finger 2 to finger 8। India has basis till finger 4 and claims up till finger 8 तक क्लेम करता है। India has till finger 4 and claim up till finger 8। China initially had at finger 4 and claim up to finger 2। That's the difference of claim। Claim समझ में आया सबको? We have control in this lake on the northern bank। Northern bank की मैं बात कर रहा हूँ, southern bank यहाँ पे है, northern bank। western पे हम है, eastern पे चाइना है। eastern पे चाइना है, western part पे हम है, southern पे कोई claim नहीं है, north पे claim है जो है। क्या फिंगर नहीं, मैंने आपको समझाया ना, जो हिमालय का स्लोप होता है ना, देखिए हिमालय पर जैसे ये है, जो स्लोप्स होते हैं, तो यहाँ पे वैलीज हैं, यहाँ पे एजेस हैं, तो जो उसके एंड पॉइंट होता है उसको क्या बोला जाता है? फिंगर। अगर आपको पैम्फलेट मिला तो उसमें डेफिनेशन लिखी होगी फिंगर की, चेक करना, इसमें कहीं पे लिखी है, मेरे को पता नहीं, नीचे ऊपर है। चलो यार तुम देख लेना अब, ये रही। ठीक है? अ लॉन्ग जेंटल स्लोपिंग टंग ऑफ द ग्राउंड दैट रन्स डाउन फ्रॉम अ हिल। हिल से जो टंग टाइप की जो शेप बनती है, उसको जो एज होती है, उसे क्या बोलते हैं? फिंगर बोलते हैं। और फिंगर कितनी है? फ्रॉम 1 to 8। इंडिया क्लेम करता है अप टिल 8, बट कंट्रोल है उसके पास अप टिल 4। चाइना हैड इनिशियली ऑन कंट्रोल ओवर 8 एंड क्लेम अप टू 2। अब इशू ये आता है कि ये सब ड्रामा है क्यों? ये सब ड्रामा है वहां पे, ऐसा कौन सा रिसोर्स है? वहां पे कुछ नहीं है, क्या हाल करेगा रह के? इसका थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको एक वर्ड बताया था, स्टेट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट? अ टेरिटरी विद अ पॉपुलेशन रूल्ड बाय अ सॉवरेन। आई टोल्ड यू अर्लियर, इसमें जो एक कंपोनेंट है, एंड दैट टू कैसी टेरिटरी? हु क्रिएटेड दिस? कैपिटलिस्ट। मैंने आपको समझाया था, कैपिटलिस्ट, यू नीड टू थैंक देम। हालांकि उनकी वजह से ड्रामा भी हुआ इनइक्वालिटी वाला,
and then they control government and all. These are the problem. But capitalists have done a lot of things in the world. They have changed the common sense. मैं आपको हमेशा बताता हूँ common sense क्या होता है. Common sense is a theory. The reality is a theory. It shapes your vision of the world. There's somebody in the army, Indian army was opposing women's induction in the army, saying that they are inferior biologically. They said, okay, biologically they have needs we cannot satisfy, basically. So this is a theory that a woman cannot do this, a man can only do this. If a man cannot do this, only woman can do this. These are different kind of theories. They are shaped. They decide everything. And जैसे for example, किसी जमाने में सती was a common norm. आर.एम. रॉय फॉट अगेंस्ट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. उस पॉइंट में कोई कहता सती हटनी चाहिए तो लोग अपोज करते थे. आज मैं बोलूंगा सती होनी चाहिए तो लोग मुझे अपोज करने लगेंगे. वहां पे ये बोलने पे सती नहीं होनी चाहिए अपोज करते थे. आज मैं बोलूंगा सती होनी चाहिए तो अपोज होगा. क्या बदला? कॉमन सेंस बदला. Most of the things that we talk in the world are based on a reference point, and that reference point is created by theories. इसका मतलब क्या है? This world is malleable. तो कोई चीज आपको पसंद नहीं है तो वो बदली जा सकती है, तो परवाह मत करो. इफ यू डू नॉट लाइक समथिंग, इट कैन बी चेंज्ड. इफ यू कैन क्रिएट अ थ्योरी, यू कैन जस्टिफाई एनीथिंग इन द वर्ल्ड. अगर आप में इतने कैलिबर है, मेंटल कैलिबर, दैट्स व्हाई इट इज सेड ना, पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड. ऐसा क्यों बोला गया? बिकॉज अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया आप छान लेना इन टाइम और स्पेस, nobody is fearful of an army, everyone is fearful of an idea. For example, Galileo. So the church, medieval Europe में church was the biggest power. It was controlling majority, entire church. King Wing उसके सामने कुछ नहीं थे. They used to obey the church, and it was fearful of a person called Galileo. क्यों? उसने बस इतना सा बोल दिया कि Earth does not revolve, sorry, sun does not revolve around the Earth revolves around the sun, and he spent his entire life in jail for blasphemy, ईश निंदा. इतना बड़ा चर्च एक छोटी सी बात से घबरा गया, बिकॉज क्रिश्चियनिटी बिलीव्स दैट अर्थ इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स. क्योंकि उसकी ये बात किसको चैलेंज कर रही थी? क्रिश्चियनिटी को चैलेंज कर रही थी. चर्च कैसे बर्दाश्त करता? अगर आज एक बात चैलेंज हुई है तो कल तो सारी बात चैलेंज हो जाएगी. तो चर्च जो मजे ले रहा है जिंदगी के, वो कैसे होंगे? There are a lot of people in this world. That's why dictators, they never fear armies of the world. वो कुछ नहीं है. They fear idea, intellectuals, because intellectuals create ideas. सबको समझ में आया? तो this is also an idea. पहले क्या होता था? There used to be empires. They used to expand and conquer. There was no fixed territory. So after a particular kind of war known as 30 years war, over time capitalist became an idea. अब capitalist war like, यार मैंने यहाँ पे फैक्ट्री बने, मान लेते हैं, I laid a factory here. Today there is Mughal Empire. Tomorrow there is British Empire. What is the guarantee that the agreement I signed with the Mughal Empire will be obeyed by the British Empire? अब I am concerned. यार territory is shifting. कभी मैं इस empire में होता हूँ, कभी मैं उस empire में हो रहा हूँ. समझ ही नहीं आ रही क्या चल रहा है. तो they evolved a new idea. Let's fix the territory. Now there will be no change in territory. The territories will be fixed forever. And that's a new idea. Evolved in Europe. India में नहीं हुआ था. This is the reason we have a war with China. We have a border dispute with China because this fixed territory idea did not take place in India, did not get birth in India. It was born in Europe in a particular historical context. It later on traveled to India as the part of colonialism. When Europe, particularly UK, they colonized the entire world, they took their values with them. जैसे आपके केस में देख लीजिए, if you think, आपके केस में देख लीजिए, why इंडिया में fair skin, white skin is considered standard of beauty? Because Britishers ruled us. Why white skin is considered? हमारी जितनी ब्यूटी इंडस्ट्री चल रही है, इसी पे तो चल रही है. तो 6,000 रुपए के मेकअप हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं. Because white skin is considered as a standard of beauty. And why? Because we all are under colonial control even today, because they ruled us. And everyone wants to look like a ruler. I can personally guarantee if Africans would have ruled over the world the way Britishers did, then black would be the standard of beauty. समझे? तो फिर वही बात आ गई जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी. Common sense, reality is a theory. It is there because you believe it. समझ में आया? तो the new
क्या बात, तो ब्लैक मनी हम इसलिए तो बोलते हैं, ब्लैक मतलब क्या, बुरा, ब्लैक मनी मतलब बुरा, विच आई कॉल ना रेसिस्ट टर्म है। इलेजिटिमेट मनी समझ में आता है, ब्लैक मनी क्या होता है भाई? इसका यूएस में ब्लैक मनी वर्ड इस्तेमाल नहीं होता, इंडिया में होता है। यूएस में क्यों नहीं होता? बिकॉज यूएस में ब्लैक राइट्स मूवमेंट है, वहां पे ब्लैक वर्ड यूज करना ही रेसिज्म है। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए अभी रिसेंट में आपने, जब ब्लैक राइट्स मूवमेंट यूएस में बहुत हुआ था, तो एक क्रीम आती थी फेयर एंड लवली, उसने नाम क्या बदला, ग्लो एंड लवली। और अब देखिए जितनी फेयरनेस के आते हैं वो ज्यादा ग्लो की बात करते हैं, फेयर वर्ड इस्तेमाल नहीं करते वो लोग, क्योंकि उन्हें पता है कि समाज बदल रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है, हमने बहुत बना लिया इन लोगों को, ठीक है। चलिए, हाँ, तो क्लियर है ये बात। अ न्यू कंसेप्ट वाज बोर्न इन यूरोप, इट ट्रेवल्ड टू इंडिया। इंडिया में देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ फिक्स्ड टेरिटरीज। इफ यू लुक एट ऑल ऑफ इंडियाज बॉर्डर, दे वर सेटल्ड बाय ब्रिटिशर्स। द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इज नोन एज Radcliffe line. The India-Bangladesh border is known as Radcliffe line. India-Nepal border, India-Bhutan border, every border is fixed by Britishers, not by Indians. So what happened? This northern region of India, there used to be buffer between empire. There used to be buffer. So in northern India, in Himalayas, neither China is wrong nor India is wrong, because whenever we had a strong ruler like Mauryan Empire, we control the Himalayas. Whenever China had a strong ruler, they control the Himalayas. It was dependent on the ruler. The powerful the ruler, the stronger the control. The weaker the ruler, the weaker the control. And that's why we both have historical claim. सबको समझ आ रहा है इशू क्यों है? बिकॉज हो सकता है, बिल्कुल होगा, वंस अपॉन अ टाइम हिमालय की जो इस समय चाइना क्लेम करता, हो सकता है किसी रूलर के जमाने में कंट्रोल करा होगा। और सेम हमारे केस में भी है, हमारे भी किसी राजा महाराजा के समय में हमारा वहां कंट्रोल रहा होगा। इसलिए डिस्प्यूट है, बिकॉज फिक्स टेरिटरी आइडिया इंडिया में पैदा नहीं हुआ, ये वेस्ट से इंडिया में आया है। तो अब जब नया आइडिया आता है तो उसे सेटल होने में टाइम लगता है ना, तो दैट्स व्हाई बॉर्डर डिस्प्यूट इज टेकिंग टाइम टू सेटल। सबको क्लियर है? एंड दिस इज कॉल्ड, टर्म याद रखिएगा, स्कॉलर टर्म, ओरिएंटलिज्म। दिस इज कॉल्ड ओरिएंटलिज्म. It was given by the scholar Edward Said. Edward Said gave the idea of Orientalism. Orientalism means that the people of developing countries, that is the countries which were colony once upon a time, they understand their own history from the eyes of the colonial masters. जैसे आप इंडिया की अगर हिस्ट्री देखें, most of India's history was written by Britishers because India had an oral tradition. मोस्ट ऑफ इंडिया हिस्ट्री अगर आप देखेंगे, इट वाज रिटन बाय ब्रिटिशर्स। तो अगर मैं एक ब्रिटिशर हूं, देखिए हम सबके साथ एक प्रॉब्लम है, वी जज अदर पीपल बेस्ड ऑन आवर मोरालिटी। हम हर कोई क्या करते हैं, वी जज अदर पीपल बेस्ड ऑन आवर मोरालिटी। सो ब्रिटिशर्स हु रोट इंडियाज हिस्ट्री, दे जज इंडिया ऑन बेस ऑफ देयर morality. That's why they call Indian barbarians. They used to say that Indians are barbarian and we are here to civilize Indians. We are not here to govern India. We are not here to exploit India. We are here to civilize India. जैसे हम टाइम को कैसे डिवाइड करते हैं, आप अगर मैं आपसे पूछूं मिडिवल पीरियड किसके नाम जाएगा, हिंदूज या मुस्लिम? किसने बताया भाई? मराठा एम्पायर भी था उस वक्त। ये किसने बताया तुम्हें डोमिनेंट मुस्लिम था? मराठा एम्पायर बहुत स्ट्रॉन्ग था। ये ब्रिटिशर्स ने बताया। हमारा जो टाइम है, एंशिएंट टाइम हिंदू है, मिडिवल टाइम मुस्लिम है, मॉडर्न टाइम क्रिश्चियन है, ये किसने बताया? ये ब्रिटिशर्स ने बताया, और हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द, दिस इज कॉल्ड, सबको समझना ओरिएंटलिज्म क्या है? ओरिएंटलिज्म एम्फसाइज दैट द पीपल ऑफ द कॉलोनियल कंट्रीज इवन अंडरस्टैंड देयर हिस्ट्री फ्रॉम द कॉलोनियल मास्टर्स व्यू पॉइंट। और इसी पे डिस्प्यूट चल रहा है। जैसे करंट गवर्नमेंट पे एक्यूजेशन है कि वो मिडिवल टाइम को पेपर से मिटाना चाहती है। अभी बुक्स में अमेंडमेंट आई है ना, कुछ प्यारी प्यारी है। नहीं, पर ये गलतफहमी मत लेना, वो मिडिवल को कम करेंगे तो एंशिएंट को बढ़ा देंगे। सिलेबस कम नहीं होगा, कंटेंट वेरी कर जाएगा। चलिए, एनीवे क्लियर है सबको? बट आर द डिस्प्यूट हियर, and this dispute is based on because we never had the concept of fixed territory in India. It was brought by the Britishers, and that's why the dispute is there.
ठीक है, बाकी तो चलता रहता है। चाइना हमारी, वैसे चीनी तो किसी को पसंद है ही नहीं। बाकी इसमें आप पढ़ लेना है, कुछ खास नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, डीटीपी इम्यूनाइजेशन। क्या इंडिया वाली? कौन से पोजीशन वाली? वो पॉलिटिकल न्यूज आपके किस काम की? पढ़ने से मजा आ जाता। उसमें देखिए कुछ नहीं है अभी। देखिए एक्चुअली दिस काइंड ऑफ कोलिशंस पहले भी बने हैं, इसे बोलते हैं थर्ड फ्रंट। अब देखना पड़ेगा कि ऐसा हो पाएगा ही नहीं, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट इज इन पावर विद 36% ऑफ ऑल वोट कास्टेड। वोट कास्ट होते थे, 36% वोट मिले थे मोदी सरकार को। इंडिया एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसमें 1% वोट आगे पीछे हो जाए तो सरकारें बदल जाती हैं। इफ the India coalition is able to maintain their uniformity, तो they can defeat मोदी। पर मुझे डाउट है, क्योंकि मोदी सरकार के पास 2 पालतू कुत्ते हैं, उनके नाम पता है उनका? बस उन्हें तुरंत बोले कि जाओ बेटा काटो, 3-4 को काट लो, ठीक है, ये अलग हो जाएंगे, देन मैं मैनेज कर लूंगा। तो देखते हैं कितना बुरा लगता होगा ना ईडीसीबीआई वालों को काम करते हुए, जहां जाते हैं वहां बेइज्जती झेलनी पड़ती है। क्या ईडीसीबीआई? वो कोई बात नहीं। चलिए, डीटीपी इम्यूनाइजेशन। डीटीपी बेसिकली इट्स अ वैक्सीन। The WHO and the UNICEF estimate that the national immunization coverage for 2022 were recently released, showcasing India's record of 93%। बहुत अच्छी न्यूज है ये। जैसे नेशनल एमपीआई वाली न्यूज अच्छी थी, इवन दिस न्यूज इज गुड बिकॉज इट शोज दैट इंडियाज कवरेज ऑफ डीटीपी इज 93। अब देखिए डीटीपी है क्या। डीटीपी इज अ ट्राइवेलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इम्यूनाइजर, मतलब इट वर्क्स ऑन 3 डिफरेंट डिजीजेस। व्हाट आर दोस 3 डिजीज? डिप्थीरिया, टेटनस एंड पर्ट्यूसिस। डिप्थीरिया, देखिए whatever I have given you here is sufficient, इससे ज्यादा मत पढ़ना। दिस इज द पार्ट ऑफ योर साइंस एंड टेक, बेसिकली डिजीजेस। साइंस एंड टेक में आपको डिजीज वगैरह होती है, उसका पार्ट है ये। ठीक है, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया क्या होता है? इट्स इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस माने इट स्प्रेड। इन्फेक्शियस डिजीज मतलब विच स्प्रेड ओवर टाइम। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम द बैक्टीरियम ट्रोनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, जो भी नाम है इसका। ठीक है, दिस इज द बैक्टीरिया जिससे ये इन्फेक्शियस डिजीज होती है। ट्रांसमिशन अकर थ्रू person to person contact. If you have diphtheria and if you touch somebody, person to person contact, then it will spread to that person also. और respiratory droplet, मतलब अगर आप सांस भी ले रहे हो उस कमरे में, 3-4 तो टपका दोगे आप, ठीक है। And exposure to contaminated surface, ठीक है। अब ये करता क्या है? It attacks on heart, nerves and other organ and particularly young children में। इसके लिए वैक्सीन हमारे पास है। समझ में आया? डिप्थीरिया क्या है? डिप्थीरिया इज अ डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय दिस बैक्टीरिया, स्प्रेड बाय पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट एंड अटैक ऑन हार्ट, नर्व एंड अदर ऑर्गन्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज टेटनस, आल्सो नोन एज लॉकजॉ। इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड क्लोस्ट्रीडियम टिटानी। क्लोस्ट्रीडियम टिटानी व्हेन इट इज प्रेजेंट इन सॉइल एंड, इसीलिए होता है ना जब आपके चोट वोट लग जाती है, आप गिर गिर जाते हैं, तो टेटनस का इंजेक्शन लगवाया जाता है। इसीलिए लगवाया जाता है क्योंकि कोई गारंटी नहीं है जिस सॉइल पे आप गिरे या जिस रोड पे आप गिर गए, हो सकता है इट मे हैव अ बैक्टीरिया कॉल्ड क्लोस्ट्रीडियम टिटानी। क्लियर? टू डील विद दैट यू हैव दिस। When this bacteria enters the body, they produce toxins that lead to painful muscular contraction। इसीलिए से बोलते हैं लॉक जॉ। द जॉ काइंड ऑफ लॉक्स, मूव करने में बहुत पेन होता है, ठीक है, इसलिए यू आर अनेबल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज lockjaw। And what does it do? It creates muscle contraction in the body, इसलिए तुरंत लगवा लो इंजेक्शन, ठीक है, स्पैज्म वगैरह। अगली है पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस मींस whooping cough। इट्स अ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। मतलब तीनों डिजीज कैसी हैं? बैक्टीरिया बेस्ड है, तीनों की तीनों बैक्टीरिया बेस्ड है। इट मैनिफेस्ट बाय persistent and severe cough lasting for several weeks। It is very dangerous for whom? Infants and young children, to the extent that they can develop pneumonia। क्लियर? बेसिक फैक्ट है, इसमें कुछ खास एक्सप्लेन नहीं है, रट लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर करना आप लोग डिटेल में, और याद रखना। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अ प्रोग्राम फॉर दिस नोन एज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है।
द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टैंड द लार्जेस्ट, ऑफ कोर्स हम इतनी बड़ी कंट्री है, कुछ भी करें लार्जेस्ट हो ही जाता है, और छोटे से इनिशिएटिव भी लार्जेस्ट होते हैं, ठीक है। So 26.5 million infants and 29 million pregnant women are covered each year. So this is each year data. Good news है वैसे तो, ठीक है। It covers how many diseases? Around 9 diseases: diphtheria, pertussis, tetanus, polio, measles, rubella, and tuberculosis, hepatitis, meningitis, pneumonia caused by whatever, ठीक है। At subscale, it covers rotavirus, diarrhea, and pneumococcal pneumonia and Japanese encephalitis. ये आपको रटना पड़ेगा, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता. You need to rot learn what is universal immunization program, when it was launched, which ministry governs it, and how many diseases it's cover. तो डिजीजेस आपको रॉट लर्न करनी पड़ेंगी. कोई भी चीज अगर रॉट लर्न करने में प्रॉब्लम हो तो आई सजेस्ट यू सर्च फॉर निमोनिक्स. नाटो का निमोनिक्स नहीं मिला गूगल पे? चलो देखना, नहीं तो मैं कुछ बना के फिर बताऊंगा आपको, ठीक है. क्लियर है? अगर ऐसा कुछ समझना है तो व्हाट यू कैन डू इज ट्राई टू गूगल निमोनिक्स, और ना हो तो खुद भी एक बना लो. यहाँ पे कुछ है ना ऊपर, उसका थोड़ा प्रोसेस करते हैं, कुछ बना लेना. देखिए निमोनिक्स बेसिकली होता क्या है, वर्ड्स को मिला के बनाते हैं. जैसे मान लीजिए क्या है, आरपीजे. आरपीजे है ना, तीन हो गए, आर पी जे, तीन. ऐसा कुछ बना लो, जूनियर क्या, इसका कुछ ना कुछ जो मैंने बोलता हूँ, जैसे आरपीजे है, जेपीआर कर लो, पीआरजे कर लो. तो नेटो का जो मेंबर्स कंट्रीज हैं बहुत सारे, कुछ आगे दे देगी लो, तुम्हारा काम सारा हो गया. कोई ट्राई करना, नहीं होगा तो देख लेंगे, ठीक है. चलिए एनीवे, अरे इधर देखो यार, क्या हो गया, सारी बातें हो गई. इधर देखो, इधर देखो. नेक्स्ट, मिशन इंद्रधनुष हो गया, हो गया. अच्छा, ये नेटो के निमोनिक्स ढूंढ रहे हैं, ठीक है. बस देखा, उसे मिल गया. अच्छा चलो चलो, एक मिनट इधर देखिए प्लीज, लुक एट दिस. तो मिशन इंद्रधनुष, पहला हमने कौन सा पढ़ा, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम. अदर इज मिशन इंद्रधनुष. इसके तहत गवर्नमेंट का टारगेट क्या, प्लीज रिमेंबर. इसका मेन गोल है टू अचीव 90% फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज फॉर चिल्ड्रन एंड, इसमें प्रेग्नेंट वुमन लिखा क्यों नहीं है वो भी है इसमें, शायद मिस हो गया है. मिशन इंद्रधनुष aims to provide 90% coverage to all pregnant women, lactating women and children. At least 90% coverage इसका टारगेट है. ठीक है, ये तो फेजेस वगैरह बता रहे हैं इसमें, ठीक है. चलिए बाकी आप देख लेना, कुछ खास नहीं है. प्लीज रिमेंबर दैट. बेनिफिट्स वगैरह छोड़ो, अगली न्यूज पे आते हैं. डेफर्मेशन. हाँ, तो व्हाट इज डेफर्मेशन? इज्जत गिर जा रहा है, इज्जत गिरा देना. So what is defamation? Defamation, as he said, is basically इज्जत गिरा देने वाली बात होती है, ठीक है. Defamation इंडिया में is a offense, but इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में सेक्शन 499 and 500 governs defamation. Defamation in India is two kind of, civil and criminal, and the problem we have with this criminal defamation. सिविल से इतना प्रॉब्लम किसी को नहीं है. देखिए डेफेमेशन जरूरी है, लॉ ऑफ डेफेमेशन जरूरी है, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ टू प्रोटेक्ट देयर डिग्निटी. अब अगर डेफेमेशन नहीं होगा तो कोई भी आपके खिलाफ कुछ भी बोल देगा. कम से कम डेफेमेशन होगा तो देयर विल बी अ डिटरेंस. अब डेफेमेशन नेसेसरी है, बट क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, बिकॉज क्रिमिनल डेफेमेशन में व्हाट हैपेंस इज यू अब्यूज, स्पेशली गवर्नमेंट अब्यूज. If you say anything to anyone, मान लेते हैं जैसे हम प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में कुछ बोल देंगे. If I say anything against the Prime Minister Modi, so he can file a case of defamation. हाँ, जैसे इन्होंने कहा था, what he said, राहुल गांधी was giving a speech. देखिए इसमें मुझे नहीं पता ये केस कैसे बन गया defamation का, because politicians says thing which makes common sense. अब जैसे कांग्रेस को भी तो बोला जाता है बारबाला की पार्टी. सोनिया गांधी की बात हो रही है यहाँ पे, शी यूज्ड टू बी बार डांसर समथिंग, मतलब हद ही पार है. एनीवे
शी वाज अ बार डांसर, जब वो राजीव गांधी से मिली थी वो, ठीक है, इससे उसका क्या लेना देना? बार बार की पार्टी बोलने का क्या मतलब है तुम्हारा? और ये बड़े ही कमाल का, मैंने आपको बताया पैट्रियार्की इतनी डीप है कि अगर आपको अब्यूज भी करना है किसी को तो आप फीमेल की मदद से अब्यूज करते हैं। गालियां देख ली सारी किसके ऊपर होती है? जितनी वही तो, जितनी गालियां होती हैं वो सारी किसकी मदद से होती हैं? आप एक मेल दूसरे मेल को गाली दे रहा है उसे डराने के लिए, लेकिन इस्तेमाल उसके घर की फीमेल का करेगा। पैट्रियार्की इस सेंस से काम करती है। एंड सेम पॉलिटिशियंस के साथ भी यही है, वो भी अगर एक दूसरे को बोलते हैं तो बार बार की पार्टी का क्या मतलब है भाई तुम्हारा? कुछ भी बोल सकते हो आप, करप्ट बोल दो, घूसखोर बोल दो, वो एक अलग बात है। दिस काइंड ऑफ वर्ड व्हाट डू यू मीन बाय? सेम चीज मौत का सौदागर, ये क्या बात होती है? मोदी जी को मौत का सौदागर बोला गया था फॉर 2002 रॉयट्स, ठीक है। इस केस में यू कैन फाइल डेफर्मेशन। सबको समझ में आया डेफर्मेशन क्या है? व्हेन यू ट्राई टू डिमीन समबडी, व्हेन यू ट्राई टू लोअर देयर डिग्निटी बाय वर्ड्स और बाय फिजिकल एक्शन, by whatever method you want to bring their dignity down, that is basically called defamation. Article 19 clause 2 of the Indian Constitution, article 19 provides freedom of speech and expression. Within that you have clause 2 that provide exception to freedom of speech. ये freedom है, इसमें से एक है freedom of speech। सबको समझा? आर्टिकल 19(2) provides exception to freedom. Article 19 provides fundamental right to freedom, particularly freedom of speech, assemble, travel, और कौन से प्रोफेशन, और भी दो तीन है, ठीक है। These are kind of freedom. और rights मैंने आपको समझाया था, what are rights? Claims against the state. Rights are a claim of a citizen against the state. And why is it so? Because you signed a contract. That contract is known as constitution. इसलिए constitution की पहली लाइन क्या है? We the people of India. The constitution is a kind of contract that you have signed, but in this contract you have said the government will have all the powers. So in return you said if you have all the powers, then I will have limitations on power called as fundamental rights. यार सबको क्लियर हुआ? तो फंडामेंटल राइट इसमें गवर्न होते हैं। यू हैव टू डेफेमेशन, सिविल एंड क्रिमिनल। सिविल डेफेमेशन मींस इट इज रॉन्ग दैट कैन बी रेमेडिड बाय सिविल लॉसूट। Anything you have said against a person that can be corrected by civil penalty. Criminal defamation is punished by the government. Maximum punishment for criminal defamation is 2 years. Supreme Court में a PIL was filed on criminal defamation by BJP politician Subramaniam Swamy. He said you should remove defamation. Supreme Court ने बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा। Supreme Court ने बोला that defamation is constitutionally valid, but Supreme Court agreed it creates chilling effect on free speech. Supreme Court ने बोला कि defamation का अपना ही कैरेक्टर है। Defamation has a very different character. Defamation has a very different character. In this, you are trying to lower somebody's dignities. You cannot have absolute freedom here. सरकार को आप कितना भी करिए, पर किसी के पर्सनल लाइफ पे आप बोलोगे तो डेफेमेशन लगेगा ही लगेगा। मेन डेफेमेशन लगता है व्हेन, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर इज करप्ट, चलेगा। बट इफ आई से नरेंद्र मोदी इज हैज डिविएंट टेंडेंसीज, नहीं चलेगा। एक में मैं नरेंद्र मोदी को डिफेम कर रहा हूं और एक में मैं प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज कर रहा हूं। क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन, बट लोअरिंग समबडीज डिग्निटी इज डिफरेंट। जैसे बार बाला की पार्टी, इन दिस यू आर ट्राइंग टू लोअर द डिग्निटी ऑफ सोनिया गांधी, मौत का सौदागर प्रधानमंत्री मोदी के लिए। इन दिस यू आर ट्राइंग टू लोअर द डिग्निटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। समझ में आ रहा है दोनों में फर्क? क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ द राइट्स एज अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, but criticizing a person for their personal life is different. ठीक है? For that we apply defamation. That's why Supreme Court said, मैं मानता हूं that Supreme Court said, I agree that it has chilling effect on free speech, but nonetheless it is very very necessary to maintain the dignity of individual, and that's why it is legal. Clear हो सबको why it is legal?
वही मैंने बताया, बैलेंस बिटवीन, क्योंकि आपका अगर राइट है बोलने का तो दूसरे का भी तो राइट है अपनी डिग्निटी बचाने का. दैट इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड. And there was a difference between section this and section 66 of IT. Section 66 of IT को अन्यूल किया गया था फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे. Section 66A of Information Technology Act. This act says if you send anything using a digital communication like message, email, photo, whatever, which has menacing character, anything you send from a digital device which has menacing character shall be punishable by jail time. अब menacing character क्या होता है, ये प्रॉब्लम था. दैट्स व्हाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, ये क्या है menacing character. क्या होता है भाई, हर किसी की टॉलरेंस लेवल अलग होता है. जैसे फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट, आप लोग मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया annulled the death penalty of a person who raped and murdered a 4-year-old girl. 4 साल की लड़की का उसने रेप और मर्डर किया था. सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पनिशमेंट को डेथ पेनल्टी से हटा दिया. सही किया, गलत किया? ठीक है, वो आपकी ओपिनियन है, बिल्कुल आप बोल सकते हैं. और जज की नजर में सोचिए, दैट जज सेड चलिए एनीवे. हाँ, सो व्हाट आई वाज सेइंग, दैट जज, देखिए दैट जज रिप्लाई, दैट जज सेड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर, एवरी सेंट हैज अ पास्ट. फॉर हिम इवन दैट अबोरेबल पर्सन इज नॉट बियॉन्ड ह्यूमैनिटी. उसका स्टैंडर्ड कितना हाई है टॉलरेंस का. यू कैन डिस्प्यूट कि उसने जो बोला वो गलत था सही था, वो एक अलग बात है. बट आई एम सेइंग अंडरस्टैंड इज टॉलरेंस लेवल ऑफ स्टूपिडिटी. That for even this he is saying that this person is as human as you and I, and this person must be given a chance to reform. और ये पॉइंट आप सब लोग याद रखना, law never aims to punish, it always aims to reform. लॉ कभी पनिश, सरकार को मजा नहीं है कि उन्होंने कानून बनाया कि रेड लाइट जंप पे 500 रुपए का फाइन लगेगा. It basically aims to deter you from doing anything wrong. It basically aims to deter you from doing anything. सबको समझ में आ रहा है? ये पॉइंट याद रखना. यू कैन राइट दिस एथिकल स्टेटमेंट जीएस पेपर 4 दैट लॉ नेवर एम्स टू पनिश, इट ओनली एम्स टू रिफॉर्म. क्लियर? एंड दैट्स व्हाई दैट जस्ट सेड दैट एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर, एवरी सेंट हैज अ पास्ट. आप लोग होते तो पक्का डेथ पेनल्टी से दे देते. ये मैं समझाना चाह रहा हूं कि जो वेगनेस है, सेक्शन 66 ए क्या कहता है, menacing character. अब menacing character can vary from individual to individual. सबको समझ में आई बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो that's why it was annulled. सुप्रीम कोर्ट ने बोला this has nothing to do with that. Defamation has a particular nature and it is very 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 necessary to protect the dignity of individual. Judgment clear है सबको? Online people clear? नहीं, उसको शायद अन्यूल कर दी थी पेमेंट, ज्यादा मुझे पता. डेथ पेनल्टी लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया था. Abhishek, that file is available in the folder that I've shared with everyone. If you don't have the access, you can mail me. में है ये फाइल, I always upload before the class. ठीक है, चलिए लेट्स डू, इधर फोकस करना सब लोग. ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड डेफर्मेशन. तो बेसिकली आपको समझ में आ गया, डेफर्मेशन बेसिकली डायल्यूट्स योर फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट इट इज अ वेरी नेसेसरी पार्ट टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल. सुप्रीम कोर्ट हैज सेड section 499 and 500 is valid because I have to maintain, or this section maintains what? This section maintains the fundamental right of all citizens, your right to speak, and so does somebody's right to protect their dignity. सबको समझ में आया? अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम मेन आती है इस चीज से. अरे कहाँ चला गया? रिमार्क्स देखिए पेज पे. The biggest problem that comes is that Human Rights Committee of ICCPR called upon the state to abolish
criminal defamation, noting it intimidates. This is the biggest problem. That क्या बोलती है हमारे ह्यूमन राइट्स कमिटी किसकी? ICCPR. It is the International Covenant on Civil and Political Rights. किसी को याद है हमने बात की थी UDHR की, Universal Declaration of Human Rights. It is a bill that is agreed at the level of United Nations that has number of rights. Within that you have two protocols which are enforceable, जिसमें से एक है International Covenant on Civil and Political Rights, दूसरा है International Covenant on Social Economic Rights. तो भी इकोनॉमिक सेशन दी क्लियर है क्या समझिए? एक कन्वेंशन है, एक कन्वेंशन इसका नाम है UDHR. कन्वेंशन जो होते हैं और यूजुअली बाइंडिंग नहीं होते. द कन्वेंशन जो होते हैं वो क्या होते हैं? यूजुअली बाइंडिंग नहीं होते. तो इसके तहत हम लाते हैं प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल आर विद इन कन्वेंशन. जैसे हमारे लॉ में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन होता है. कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर लॉ बनते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? आर्टिकल्स. The provision of constitution are called articles. The provision of a law of parliament or state legislatures are called section. Word अलग अलग है. Same चीज में क्या होता है? There is a main law called UDHR, Universal Declaration of Human Rights. Within this you have protocol जो इसके नीचे है, which try to enforce parts of UDHR. समझ में आया? UDHR बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं और वो इन्फोर्सेबल नहीं है. तो हमने क्या करा? इसके अंदर हमने प्रोटोकॉल्स बना दिए. प्रोटोकॉल्स इसके कुछ कुछ पार्ट को एनफोर्स करता है, जो भी साइन करेगा. उसमें से एक प्रोटोकॉल है हमारा इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स. अब सबको समझ में आया व्हाट इज ICCPR? टू ओवरव्यू हाउ मच ICCPR आर वर्किंग गुड, एज अ ओवरव्यूअर एक बॉडी बनाई गई, इसका नाम है ह्यूमन राइट्स कमेटी. अब सबको क्लियर है? The Human Rights Committee of ICCPR has clearly said, please abolish criminal defamation. Keep defamation, but only civil. इसमें cognizable तो नहीं है, तो मुझे पता है, चेक कर लेना एक बार. क्योंकि defamation आप फाइल करते हैं कोर्ट में, उसके बाद केस बनता है. Defamation you have to file in the court first. जैसे अरुण जेटली फाइल्ड अगेंस्ट केजरीवाल को आदत थी ना मफलर पहन के चोर बोलने की. सबको बोलता फिरता था तू भी चोर, तू भी चोर, तू भी चोर. ठीक है, गलत था, ऐसे नहीं बोलना चाहिए. चोर है तो क्या हुआ, बोलना क्यों? ठीक है. चलिए आगे करते हैं. क्लियर? सो एनीवे वी हैव लॉज लाइक सेक्शन 124, 153 एंड 153A. We already have this section which deals with your animosity among the community. Particularly से आपका 153 and 153A section किससे डील करता है? Promoting animosity among communities. Promoting animosity among communities. क्लियर है सबको? तो defamation क्लियर, arguments क्लियर. अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे. Let's move to the next news. टाइम हो गया तो पढ़ लो. एक न्यूज बचे थोड़ा सा. अरे घर पे नहीं पढ़ना. सियाचिन ग्लेशियर लास्ट न्यूज है यार, देख लो. लास्ट न्यूज इज सियाचिन. देखो लास्ट न्यूज इज सियाचिन ग्लेशियर. Siachen Glacier is a non-polar glacier on the basically the border of India and Pakistan and China. Tri junction का पॉइंट बनता है. अब प्रॉब्लम समझते हैं. देखिए, what is the problem with Siachen Glacier? We had signed an agreement called Shimla Agreement after 1971 war. 1971 war in which we created Bangladesh. After that we signed Shimla Agreement. Shimla Agreement में Pakistan agreed that there is something called line of control. It was initially known as ceasefire line. It was a line where Indian armed forces and the Pakistani armed forces stopped when there was an invasion of Jammu Kashmir at the time of independence. सबको समझ में आया? At the time of independence, the Indian army went in Jammu Kashmir. There was a point where both stopped. That is known as ceasefire line. That was created by Karachi Agreement, जो साइन हुआ था बाद में. After that, you have in 1971 you got Bangladesh war, and Bangladesh war में we signed Shimla Agreement. Shimla Agreement में we agreed that line of control or LOC starts from international border and it goes to a point known as
NJ9842, पॉइंट का नाम क्या है? NJ9842। देखो इसमें कहीं पे लिखा होगा, ये रहा NJ9842। सो दिस इज द लास्ट पॉइंट। अब गेम देखिए, इसीलिए पता लीगल लैंग्वेज बड़ी संभल के लिखनी पड़ती है। द सिमला अग्रीमेंट सेज दैट LOC from NJ9842 goes north, but it fails to say west of north या east of north। प्रॉब्लम समझ में आ रही है? It says that LOC from NJ9842 goes to north, but which north? West north या east north? Because it varies। अगर NJ9842 ये पॉइंट है, अगर वेस्ट जाएगा तो सियाचिन ग्लेशियर विल बी द पार्ट ऑफ इंडिया, अगर ईस्ट जाएगा तो सियाचिन ग्लेशियर विल बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। दिस इज द डिस्प्यूट। सबको समझ आया डिस्प्यूट क्या है? इट इज बिकॉज वी वर अनेबल टू क्लियरली राइट इन द शिमला अग्रीमेंट दैट LOC गोज टू नॉर्थ, सॉरी नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट। अब क्या हुआ? वी केम टू नो कि पाकिस्तान इज प्रोवाइडिंग व्हाट लाइसेंस इज समथिंग फॉर माउंटेनियरिंग। हमें पता लगा कि माउंटेनियरिंग का लाइसेंस वगैरह दिया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैरिड आउट एन ऑपरेशन कॉल्ड ऑपरेशन मेघदूत एंड वी कैप्चर्ड द स्ट्रेटेजिक हाइट्स। ये तो ये रहा ऑपरेशन मेघदूत। वी कैरिड आउट ऑपरेशन मेघदूत एंड वी कैप्चर्ड द स्ट्रेटेजिक हाइट्स। अब इसका देखिए सबसे बड़ी बात, रिसेंटली एक न्यूज इसलिए कॉन्टेक्स्ट में थी बिकॉज हमने एक सर्वे करवाया था। वीके रायना he carried out a survey in 1958 when it was not a disputed point. It became a disputed point a lot later in 1980s। सियाचिन ग्लेशियर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूटेड पॉइंट था ही नहीं, क्योंकि इट इज एन इनहैबिटेबल प्लेस, अनइनहैबिटेबल प्लेस। यू कैन नॉट इनहैबिट दिस प्लेस, इट्स टू हाई टू लिव। बट फिर भी हम वहां पे देखिए, इट इज अ क्लासिकल केस ऑफ मिसट्रस्ट। इट्स अ क्लासिकल केस ऑफ मिसट्रस्ट। यू आर डिस्ट्रॉइंग द इकोलॉजी ऑफ द ग्लेशियर। आप अपने वॉर के चक्कर में एक ग्लेशियर बर्बाद कर रहे हैं। एंड मोर पीपल, मैंने नीचे रिमार्क्स में स्कॉलर एनालिसिस में लिखा है, मोर पीपल डाई देयर आउट ऑफ फ्रॉस्ट बाइट्स देन बाय बुलेट्स। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेंड्स 5 करोड़ रुपीस पर डे। एंड दिस इज फिगर ऑफ 2000 समथिंग के। So 5 crore rupees you are spending to just maintain soldier on a land that you will never use. And so does Pakistan. In a country where 50% of your women are malnourished, 1/3 of your children are hungry, उस देश में आप 5 करोड़ रुपए एक दिन के बर्बाद कर रहे हैं एक जगह पे जो आप इस्तेमाल करोगे भी नहीं। पर प्रॉब्लम क्या है? दोनों कंट्री को मैं बोल रहा हूं, इसीलिए स्टेफन पी कोहेन ने एक बहुत प्यारी बात बोली है, सियाचिन ग्लेशियर इज अ गुड एग्जांपल ऑफ अ टू बेल्ड पीपल फाइटिंग फॉर अ कॉम। दो गंजे कंघी के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, और वही सियाचिन ग्लेशियर है। बात समझ में आती है कि वी बोथ आर पुअर कंट्रीज। हमें फोकस किस पे करना चाहिए? डेवलपमेंट ऑफ आवर पीपल। पर हम फोकस इस पे कर रहे हैं एक ऐसे लैंड पे जो हम कभी इनहेबिट करने ही वाले नहीं है। प्रॉब्लम समझ में आई? पर फिर हम क्यों इतना ड्रामा पेल रहे हैं? दो रीजन है। पहला ये कि अगर इंडिया उतर गया ऊपर से, इफ इंडिया कम्स आउट ऑफ द स्ट्रेटेजिक हाइट, पाकिस्तान कैन कैप्चर इट, और फिर इंडिया दोबारा कैप्चर नहीं कर पाएगा बिना ग्लेशियर को बर्बाद करे। अभी तो हमने कैप्चर कर रखा है। इफ वी कम डाउन एंड इफ पाकिस्तान गोज अप, then we cannot capture the heights again without destroying the glacier, क्योंकि वॉर होगी, और वॉर होगी तो ग्लेशियर खत्म, and which will be a sad day for humanity। it's a large non polar glacier। वैसे हमने एनवायरनमेंट को बर्बाद करा हुआ है। प्रॉब्लम समझ में आई? दूसरा रीजन, there is a region called ट्रांस-काराकोरम ट्रैक्ट। मैंने देखिए स्ट्रेटेजिक में मैंने लिखवाया हुआ है, द प्रॉब्लम इज इट एक्ट्स लाइक अ वॉच टावर। हमने पाकिस्तान ने जो एरिया ऑक्यूपाई करा हुआ है गिलगित बल्तिस्तान का, इन दैट एरिया, पीओके एंड गिलगित बल्तिस्तान दो एरिया है, इन दैट प्लेस देयर इज अ एरिया कॉल्ड ट्रांस-काराकोरम ट्रैक्ट। 1960s में पाकिस्तान गेव दैट एरिया टू चाइना एज अ गिफ्ट। अब उससे इशू क्या हुआ? दे साइंड अ टीटी 1963। जब गिफ्ट में दिया तो टीटी साइन होगी। उस टीटी में चाइना ने बोला कि आई डू नॉट नो हु कंट्रोल्स जम्मू कश्मीर। चाइना ने क्या बोला? मुझे नहीं पता जम्मू कश्मीर पे सॉवरन कौन है, जो भी इस पे सॉवरन होगा वो मुझसे रीनेगोशिएशन करेगा। कहने का मतलब चाइना इज अ साइलेंट थर्ड पार्टी टू जम्मू कश्मीर।
को समझ में आया? 1963 एग्रीमेंट में क्या बोला चाइना ने? मुझे नहीं पता जम्मू कश्मीर का मेन गवर्नमेंट कौन है, हु इज द ट्रू ओनर ऑफ जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान और इंडिया। whosoever settle, मतलब फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान विल सेटल द क्वेश्चन कि हु इज द रियल ओनर ऑफ जम्मू कश्मीर, और जब ये सेटल हो जाएगा देन यू हैव टू स्टार्ट नेगोशिएशन विद चाइना। चाइना इज अ साइलेंट थर्ड पार्टी टू जम्मू कश्मीर। यूएन का कोई रोल नहीं है इसमें। कराची शिमला अग्रीमेंट में पाकिस्तान ने हमसे अग्री किया था कि सारे डिस्प्यूट बायलेटरल होंगे। फिर हमें रीनेगोशिएट चाइना से करना पड़ेगा ना। एक बार हमने जो हमारा ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट वगैरह गिलगित बल्तिस्तान है, अगर हमने कैप्चर कर लिया फिर हमें चाइना से दोबारा नेगोशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना कैसे अलाउ करेगा? वहां पे चाइना का रोड बना हुआ है, चाइना के कंट्रोल में वो टेरिटरी, उसकी आर्म्ड फोर्सेज है। तो जो हमारी, आपको पता है मीडिया, मैंने बताया आधे टाइम तो झूठ बोलती है, तो जो बोल रहे थे ना कल हम चाइना को कैप्चर करने जा रहे हैं, सॉरी पीओके को, न्यूज आई थी बीच में, दिस वाज अ लाई, बिकॉज अगर आप पीओके में घुसे तो आपको दो लोगों से लड़ना पड़ेगा। पीओके से अगर आप लड़े तो आपको दो लोगों से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि पीओके में दोनों के इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्योंकि पाकिस्तान से लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी आपको, चाइना से भी लड़ना पड़ जाएगा, और हम टू फ्रंट वॉर नहीं कर सकते, चाहे पसंद हो ना पसंद हो, ये सच्चाई है। तो नेशनलिस्ट होना अच्छी बात है, पर एक रियल नेशनलिस्ट होना चाहिए। ये फेक नेशनलिज्म नहीं चलेगा, मिथ बेस्ड, पर ये करना जरूरी है। मैंने आपको बताया मीडिया किसके कंट्रोल में है, नैरेटिव कैसे शेप होते हैं, वो जरूरी है ना। अगर ये नहीं करेंगे फिर आप लोग बोलने लग जाएंगे सर मेरे पे जॉब नहीं है, फिर उसका जवाब देना पड़ जाएगा। जैसे बढ़िया क्या बोले, देखो पाकिस्तान, जब भी आप बोलोगे मेरे पे जॉब नहीं है, मेरे पे भूख लग रही है, तो क्या हुआ? तुम देश के लिए भूखे नहीं रह सकते? हमारे सोल्जर सियाचिन में भूखे हैं, तुम भूखे नहीं रह सकते? ये क्या बात हुई भाई? ये कौन सा लॉजिक है? वो जो काम कर रहे हैं वो रिस्पेक्टेबल है, लेकिन इसका ये क्या लॉजिक है कि मैं भूखा रह सकता हूँ? ये तो तुम्हारी नाकामी है ना। सबको समझ में आ रही है बात? तो ये प्रॉब्लम है सियाचिन के साथ। आप एक तो इकोलॉजी बर्बाद कर रहे हो, आप इकोनॉमी बर्बाद कर रहे हो। यू आर स्पेंडिंग 5 करोड़ रुपीज, वो कंट्री को मैं कह रहा हूं, ऑन अ लैंड विच नोबडी विल ऑक्यूपाई एनीवे। इट्स अ इकोलॉजिकल डिजास्टर, इट्स इकोनॉमिक डिजास्टर टू, एंड दिस ऑल इज हैपनिंग बिकॉज यू हैव अ मिथ कि कौन सुपीरियर है। चक्कर के एरोगेंस में फंस गए हम। रिमेंबर मैंने आपको एक चीज बताई थी। अच्छा एक चीज बताओ, फिर मैं क्लास एंड करता हूं। एक चीज मुझे बताओ, विच थिंग यू थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट? अगर इंडिया पाकिस्तान में कोई एक चीज आपसे पूछी जाए कि इफ यू करेक्ट दिस इंडिया पाकिस्तान दोस्त बन जाएंगे, तो आप किससे बोलोगे? इसको अरे है इजिंग माइनॉरिटीज, अच्छा वो माइनॉरिटी का इस्तेमाल ना करें, हम भी ना करें। हाँ इंडिया की मीडिया पाकिस्तान की मीडिया है टेररिज्म। और कोई पॉइंट सोचो, कुछ तो सोचो। कुछ भी नहीं। द रीजन बीइंग, अगर स्टेफन पी कोइन, जिसने ये बोला ना कि दो गंजे कंगे लड़ रहे हैं, उसी व्यक्ति ने अपनी बुक में बोला है इंडिया पाकिस्तान इज इन पेयर्ड माइनॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट। मैंने पहले भी आपको समझाया था, पेयर्ड माइनॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट, जस्ट लाइक ज्यू एंड अरब्स, शिया एंड सुन्नी, इट्स अ पेयर्ड माइनॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट। देयर आर सम माइनॉरिटीज इन इंडिया, माइनॉरिटीज मैं यहाँ पे रिलीजियस नहीं कह रहा हूँ, इंटेलेक्चुअल माइनॉरिटी की बात कर रहा हूँ। There are some people in India and there are some people in Pakistan who will never like to have good relations. Otherwise, how will they justify their power? For example, Pakistani army. पाकिस्तान गरीब पाकिस्तानी आर्मी की वजह से, पाकिस्तान पे अगर 10 रुपए होते हैं, पाकिस्तानी आर्मी 9 रुपए ले लेती है। एंड व्हेन पीपल बोलते हैं व्हाई यू आर टेकिंग 9 रुपीज, दे से वी हैव इंडिया टू फाइट। पूरा सैक्रिफाइस नहीं कर सकते देश के लिए आप लोग। नेशनलिज्म, दैट इज द प्रॉब्लम विद नेशनलिज्म। You got the point. That is a Stephen P. Cohen said. अब सोचिए इंडिया पाकिस्तान फ्रेंड बन गए, तो हमारा मीडिया क्या करेगा बेचारा? सुबह शाम जिस देश को आप गरिया रहे हो, अब फिर क्या करोगे? क्या भूखमरी की बात करोगे या अनएम्प्लॉयमेंट की बात करोगे? वो तो नहीं कर सकते। तो आपको किसी की तो बात करनी है। यू विल इंटेंशनली कीप एन एनिमी। सेम पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी विल नेवर लाइक दैट इंडिया एंड पाकिस्तान बिकम फ्रेंड। तभी आप नोटिस करना, whenever India Pakistan starts talk, some terrorist event happens. जब भी हम बात शुरू करते तभी आतंकवादी हमला होता है, पहले आगे पीछे नहीं होता।
For example, recently when Modi ji invited the Jammu Kashmiri leaders for a talk over the future of Jammu Kashmir, उसी एक वीक में जब टॉक हुई, उसी वीक के अंदर एक बॉम्ब ड्रॉप होता है टेक्निकल बेस में जम्मू कश्मीर पे। सोचिए, वीक का टाइम भी नहीं लगा, यहां मोदी जी ने बात करी है और एक वीक के अंदर एक बम गिरता है टेक्निकल एरिया पे एयरफोर्स के जम्मू कश्मीर में। इतनी बढ़िया टाइमिंग, बिकॉज पेयर्ड माइनॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट। तो उसने बोला कि जम्मू कश्मीर इंडिया अगर पाकिस्तान को दे दे, इफ इंडिया गिव्स जम्मू कश्मीर टू पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर गिव्स इंडिया टू पाकिस्तान, सॉरी उल्टा हो गया, इफ पाकिस्तान गिव्स जम्मू कश्मीर टू इंडिया, even then they will not be friends, because the minorities in both countries, the intellectual minority in both countries, they want to make each other enemy. Otherwise how will they justify their power, their exploitation of resources? सबको समझ में आया रीजन? तो सियाचिन ग्लेशियर उसी का एग्जांपल है। इस पे दोस्ती हो सकती है लेकिन होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? फिर लड़ोगे कैसे? फिर आपसे ये कैसे बोला जाएगा आप भूखे नहीं रह सकते, हमारे सोल्जर सियाचिन में? वो बोलना पड़ेगा ना, उसके लिए सोल्जर सियाचिन में चाहिए भी। सबको समझ आ रहा है? स्टेफन, मैंने इसमें कुछ भी नहीं बोला दिल्ली पुलिस, सारा स्टेफन पी कोहेन ने बोला, ठीक है? तो मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। चलिए, बाय बाय, देन वी विल मीट अगेन नेक्स्ट सैटरडे। हैव अ नाइस डे, नेक्स्ट वीकेंड। बाय बाय, वेलकम। हेलो, क्लास में था जस्ट अभी।